Thank you so much, sir. Sir will be giving a talk on the topic evidence-based practice in Ayurveda for stress management. Sir, it is an honor to have you with us. Along with him, I extend my warm welcome to the panelists of this session, that is Dr. Balraj Chaudhary, sir, and Dr. Vijay Prakash Mishra, sir. We are grateful for your presence and your contribution to this academic deliberation, sir. Now to invite, I request Dr. Naveen Kumar BV sir, Professor and HOD in the Department of Comar Britya, to kindly put forward a brief yet insightful introduction of our esteemed resource person, Dr. Suhas Kumar Shetty sir, and thereafter request him to deliver his presentation. Thank you, sir. Good afternoon, everybody present here. Manayatana 2025. It is our profound honor to introduce Professor Dr. Suhas Kumar Shetty sir, an eminent scholar, researcher, and visionary field in Ayurveda, mental health, and clinical research. Dr. Suhas Kumar Shetty sir is currently serving as a principal medical director of KLE Sri BMK Ayurveda Mahavidyalaya Belgavi, a premier institution under KLE Academy of Higher Education and Research, deemed to be university. He is also an faculty of Southern California University of Health Sciences, USA, reflecting his international academic standing. A distinguished expert in mental health, clinical research, and medical statistics, Dr. Suhas Kumar Shetty sir has contributed immensely to Ayurvedic field. He has authored 4 books, including a widely used textbook in biostatistics published by CCRAS New Delhi and approved by NCIS. His academic contributions include 85 scientific research papers in reputed journals, and he has an impressive record as a principal and co-investigator in several funded research projects, 10 completed and 8 ongoing. Supported by various national and international agencies, a passionate teacher and guide, he has mentored over 50 postgraduate scholars and 10 PhD researchers. Dr. Suhas Kumar Shetty sir is regularly invited as a resource person for major national as well as international conferences, seminars, and expert panels. He is a member of several high level committees, including the Accreditation Committee of the Ministry of Ayush, the Ayurveda Training Accreditation Board, expert committees of WHO, NCISM, CCRAS, and various university bodies. He also serves as a technical expert for key policy documents and as an official member of Karnataka State Mental Health Authority under the Department of Health and Family Welfare, Government of Karnataka. We are truly privileged to welcome Professor Dr. Suhas Kumar Shetty sir to Mano Ayatana 2025, organized by the Institute of Ayurveda, Major ST Singh University, Farooqabad. His presence adds great value to this seminar, and we eagerly look forward to his insightful contributions. Thank you for giving me opportunity, and I welcome sir. Now the stage is yours, sir. Thank you. A very good afternoon to all of you. At the outset, I deem to be a great honor and pleasure to be a part of Mano Ayatanam 2025, the national seminar on the Ayurvedic approach towards stress management.
and Coping Strategies, organized by the Institute of Ayurveda, Major SD Singh University, Aurangabad. And I would like to thank the management, the Dean, Vice Chancellor, and the principal, and all the organizing committee members, especially Dr. Anupama, Dr. Vinayak, and all the team of organizing committee and dear students. Really, I would like to really acknowledge and appreciate the organizers because most oftenly we have seminars and conferences on various physical disorders or what we commonly call as somatic disorders. But very few organizers come forward to have an exclusive seminars on mental health. So I would like to really appreciate the organizers for this nice thought and organizing this. As you all know that is the right time for everyone, all of us probably to focus on the mental health because most of us generally we put a lot of efforts on physical health, but the less explored area is the mental health. And if you look into the clinical practice, because being a hardcore practitioner for last 25 years, I feel that a lot of patients come to us with a lot of problems related with the stress related issues, psychological problems, even if they're suffering with physical disease, maybe joint pain or headache, osteoarthritis, psoriasis, bronchial asthma, any common physical disease, some or the other way they Good have evening, everyone. some psychological involvement. That's the reason why having some basic knowledge of how do we approach psychological patients, what are the common principles that we adopt for its diagnosis, and how do we clinically manage such conditions will be what we'll be discussing in today's session for next 1.5 hour, or till the chairperson rings the bell, we're going to continue. How many of you have seen Bahubali? Everyone. हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते लेकिन बाहुबली जरूर देखते हैं इट्स मैंडेटरी दैट वी हैव टू सी बाहुबली तो उसमें कैसा होता है कि इंटरवल के बाद का जो स्टोरी है ना वो सबसे पहले दिखा देते हैं और इंटरवल के बाद जो होता है ना वो एक्चुअली द फर्स्ट हाफ होता है हमारा सेमिनार भी तो कुछ ऐसा ही है एक्चुअली सबसे पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस होना चाहिए था उसके बाद मैनेजमेंट होना चाहिए था So my friend Dr. Hiraman has already elaborated you on the management part. और हम अब करेंगे how do you approach such patients, right? Anyway, see, it's always see ultimately we want um, to know these problems basically for two purposes. One is for the diagnosis, and the second important thing is for the management, right? So management, you fairly had some basic ideas, okay? Now we will just see how exactly we approach such patients in a clinical scenario. See, I'm not going to bore you with the basic theory aspects of what is stress, what causes stress, what are the physical symptoms of stress. Okay, so that I deem that you have some basic knowledge. इसमें से यूजी स्टूडेंट्स कितने हैं सारे ओ हैं हमने भी ड्रेस पहना है ओके स्ट्रेस वाले मैं से ड्रेस वाले ओके या so the topic that I'll be covering is the clinical approach to stress and Ayurvedic perspective, right? See, the most important term that is there is the clinical approach. How do you clinically, whenever a patient comes to your clinic or to your hospital, how do we approach patient has some amount of stress, right? So, what do you mean by stress? What is it? What do you mean by stress? Hmm? What is stress? Very good. See, anything that interferes with your general homeostasis is called a stress. You can clap for him.
Yeah. Anybody else? Anybody else? What is stress? See, this is a very common term, isn't it? Have you heard about stress? आपने सुना है ना? Stress, anxiety, tension. What comes to your mind whenever you think of stress? A feeling of not feeling well, a feeling of not feeling good. Yeah. A feeling of not feeling good, isn't it? अच्छा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. See, every time no, जब हम क्लास जाते हैं ना, हम लोग सुबह सुबह आज अच्छा नहीं लग रहा है, क्लास सुनने का मन नहीं कर रहा है. होता है? रोज होता है? सभी पीरियड होता है? वो अच्छा नहीं है. Once in a while it's okay, but not regularly, right? Yeah. Or what else? What else according to you is stress? Students, according to you, what is the definition of stress? Physical, mental, and social well-being is stress. Is health. Physical, mental, and social well-being is a definition of health. Okay. Anybody else? Next slide. Yeah. Things that we are going to discuss as an outcome of today's session would be, we are going to define what do you mean by stress, what are different kinds of stress, how do you understand stress in Ayurveda, and what is the basic samprapti or the basic pathogenesis of stress-related disorders. Most importantly, the principles and management of stress-related disorders, some clinical scenarios, clinical experiences, and how do we prevent? Because Ayurveda strongly believes in prevention, right? So how do you prevent the stress-related disorders? And some important take-home message, right? Next slide. So I have 4 questions for you, right? The first question, basically, we have already asked, what is stress? Okay. See, stress account as eyes, anxiety, nervousness, tension, not feeling good, khana you don't feel good, don't get good sleep, isn't it? But hamesha stress is always bad. Can you give any one example when stress is good? Exam. During exam, stress is good. Very good. Why stress is good during exam? See. We will have one rule. Okay, whoever wants to answer can raise your hand and stand up and answer, right? Yeah, अभी बोलो. See, we all are good in group answering. जब अकेले का बात आता है ना, कोई हिम्मत नहीं लेता है. That is also is a stress. Ah, because we are alone, no, we feel that everybody is watching us. Everybody is, Well, why during exam it is stress is good? Very good. See, because of the stress. See, you imagine 1 week before exams हम कितने पढ़ते हैं? अगर इतना सारा साल पढ़ेंगे कैसे होगा? आपके कॉलेज वालों को गोल्ड मेडल देना पड़ेगा सबको. Isn't everybody should? You can clap. Don't suppress, because suppression again causes disease. See, Ayurveda has 2 Vegas. You know, which are these Vegas? Dharani Vega and Adharani Vegas, isn't it?
Adharanya is 13. What is the definition of Dharaniya Vegas? What is definition of Dharaniya Vegas? One. See, we have already made a ground rule, basic rule that आप सभी साथ में बात नहीं करेंगे. One by one. What is Dharaniya Vega? Anybody? What is Dharaniya Vega? आप क्या डिस्कस कर रहे हैं इतना? What is Dharaniya Vega? शारीरिक काम की जैसी रोगा देना ये आवाज कहाँ से आ रहा है? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. उसका मीनिंग क्या है? हो गया, इच्छा हो गया, भूख, लालच, इन सबको धारण करना चाहिए. वेरी क्या धारण करना चाहिए मतलब क्या है? धारण करना क्या है? बाहर नहीं निकलना है, अंदर ही रखना है. बहुत से लोगों से पूछता करते हैं. गुड गुड, वेरी गुड. See, very oftenly we define Dharaniya Vega as that which has to be suppressed. See, but emotions should not be suppressed. Okay, their dharana is to see that it doesn't go beyond the level of normalcy. जो normal है ना, it should not go beyond normal level of and see, this normalcy is not universal. It is not always applicable. It is based on place, time, and person. See, suppose you are in a holiday mode. Your emotions are different. Suppose you have some exams, your emotions are different. Suppose somebody, your close friend, is not feeling good, or your parents has some disease, your emotions are different, isn't it? It depends upon the place, time, and person. And this is also equally important that how you manage this, or how you have the coping strategies, isn't it? Coping strategies is what we learn of managing these emotions, right? So always stress is not always bad. See, there are two kinds of stress: eustress and distress. EUSTRSS, which is good stress. आप जो बोल रहे हैं ना एग्जाम के टाइम पे, या आपको कुछ स्पोर्ट्स है, you have to do some performance. So even I am also having some kind of stress, and this is eustress. When you start enjoying this stress, that is what your performance becomes better. But when it causes some amount of problems or the other way, this is called as distress. DISSTRESS. Eustress and distress. Positive stress, negative stress. Good stress, bad stress. Okay, and both are important for us to maintain good, right? And then you should also know what is that activity which takes a lot of your time. ऐसी कौन सा एक्टिविटी है दिन भर इन एवरेज, अगर आप लास्ट 1 मंथ का पकड़े, ऐसा कौन सा एक्टिविटीज में आप बहुत इन्वॉल्व थे? मोबाइल, हाँ? नहीं, मोबाइल, सी मोबाइल अच्छा है. ओके, इट इज गुड बिकॉज नाउअडेज इट इज टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, एंड एवरीबडी इज using so much of technology to explore a whole world. But for what purpose you are using? Okay, what is the purpose of its usage? For education, for learning, it's always good. But you're using it for some kind of entertainment or just for scrolling the reels, then it doesn't.
help you anything, right? So what is that? Hello, hello. Okay, okay. ये भी पकड़ना है ना? ये नहीं पकड़ना है. या ये इससे स्ट्रेस होता है. And especially when it comes to this, which is that particular event or particular activity which is taking a lot of your time. Anybody? पढ़ाई मत बोलना कि आपके टीचर सामने बैठे हैं. Anything. See, you just have. See, you need not tell to anybody. You can just evaluate what is that activity which is taking a lot of your time, and whether it is worth investing your time for that. Okay, and then you should able to change. If at all it is not having any output, उसका कुछ use नहीं है, तो you should probably make an effort to change those efforts, right? And then very very important in life is having some goals. Okay, we should always have some goal. Okay, अगर आप आज सेमिनार के लिए आए हैं, you should have a goal. That is why our first slides were outcome. You should always know why I am doing this. What is my purpose of doing any activities in my life? और आप जब करोगे, then only you will be having that satisfaction. You will have that happiness in life, and that is the main purpose of anybody's life. For which always you should have some amount of goals, which could be academic goal, social goal, career goal, etc. Okay, have some short-term goals like what I should do in 1 month, 6 months, 1 year, 5 year. Where do you see yourself? No, where do you see yourself as? Okay, in next 5 years. Okay, you should always have that goal, and not just having the goal, but also goal. Yeah, putting your efforts to fulfill that goals, okay, is also equally important. And see, always this goal is always a journey, not a destination, right? It is not the end. You go on improving yourself. You should become your own better version, right? So with this background, so what we'll try to do is we'll try to do little more clinical approach, right? So I'll show you one video, and then probably my entire presentation will revolve or evolve under that particular presentation. Okay, it's a small a patient who we treated last month. Okay, and based on that, we'll just try to see. We'll try to cover this particular topic, like what is stress, how do you evaluate stress, and what is the common cause of stress, right? Good evening, everyone. My name is Aparna, and basically I'm from Hyderabad. And it's been 3 years we are living in Belgaum. Actually, I had a few health issues. I was taking tablets for sleep for quite a long time, and the dosage was very high. And despite my tablets and follow up with the doctors, my sleep issues were never addressed. And moreover, of late I started having very strange dreams, and they were literally bothering me in the mornings, and I used to be very upset for the whole day. And then when things went out of my control, when I started getting panic attacks because of these dreams, I talked about it with my yoga teacher, and when I was trying to figure it out, I came to know about hypnotherapy. So we went around, and I tried inquiring with people around, and then what I came to know is if I contact any random person, the chances are that I might be get exploited, or they might be playing with my mind or something else. So the trust factor becomes very important here. So we cannot blindly trust any hypnotherapist. He has to be very genuine. So thinking about the negatives, I backed down, and then one as when I told you when I discussed the same thing with my yoga teacher, he suggested me like I can contact the supervisor. And when I tried inquiring about him, I came to know that I can totally trust him.
And and finally, when I approached him, I came here with many doubts, with lot of fear, and I was not 100% okay opening up to him because the same fear of trust was there. But finally, I realized that I should have faith in the process and I should trust him. And then when I opened up to him, he heard my issues and he told me that things will be fine. Not overnight, it might take their own time. And then he stated the fact that it will not be as they show in the movie. When we say hypnotherapy, it is not like what is shown in the movies. So it's completely different. So then I felt right, a sort of a positive feeling, you say, or the trust factor, it started in me. Then I started believing it, and then the first session, I felt very emotional when I was in a deep state of trance. I don't know, but I felt many memories which did not heal over a period right from my childhood. They came over up and they triggered me, which I never realized them that they have affected so badly, or I had the wounds so bad. They were addressed, and after that day, I felt very, very relieved, as if a tons of burden was removed from my head. And then after a week, I had my second session, and that session was really a boom because after that, I never had any bad dreams. It's been almost more than a month because every day when I sit in meditation also, I used to get the distorted images and distorted mountains and that people jumping into fire or the pool of blood which I used to see even in meditation, and I used to be very scared and I never used to meditate also. I used to avoid meditation also. But after this, it's almost been more than a month. Now, till now, I did not have any bad dream. So every morning when I get up now, I feel little relaxed, little fresh, and even I started sitting in meditation again now, and I have never seen any bad dreams or any bad images in my meditation also. So finally, I'm very, very happy. And thanks to Suhasra and the team of KV because it was very difficult for me to open up to people whom I don't know, and I was not even very confident about the therapy because I never heard about hypnotherapy. This was the very first time I approached someone. So the first thing what happened here is they gained my trust. They made me believe that things will be fine, and they addressed the things which I never even realized I had that issue. So thanks to Suhasra and his team. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Now, see, I think you have heard about this patient, right? Whom we have treated last month, right? She came to me around 4 months back for the first time, and since then we have treated her, and we just had treated her in 3 sessions. In fact, just last week I did her third session. Otherwise, we have just treated her in 2 sessions of therapeutic hypnotherapy, and this is what we have done. Not even a single medicine we have used in this patient. Okay. See, that is a power that we have in the treatment of such major issues. A 15-year-old with 15-year chronic patients of severe insomnia with very high dose of medications coming to you, and you can just treat them with some skills of counseling and some basic therapies, and that is the potential that you can do it. Okay, and we, like, again, see, hypnotherapy generally takes at least 1 to 2 hours of time. Okay, and then just by 2 sittings that we did with her, and then again last week we just did a follow-up things with her, right? So now, what are the various things that you understand from this particular case related to our topic? Our topic is the clinical approach to stress and Ayurvedic perspective. Okay, and how do you take this case scenario as a model for understanding this particular topic?
See, basically, what you should understand is sometimes we know what is the cause of stress, but sometimes we do not know why this is happening. ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, why I'm not feeling good. ऐसा होता है? Do you feel like that? Not only us, some patients will always express why you are having this problem. The patient will not be able to tell you. So the stress can be known stress, and sometimes the stress can be unknown stress. Okay, the stress can be expected stress, and sometimes it can be unexpected stress. For example, exam. Exam is a known stress or unknown stress? नहीं, आप जब पढ़ेंगे तो known stress होगा, isn't it? So it's basically a known stress. But somebody in your family gets sick, or suddenly one of your uh, close friend has an accident. This is unknown stress, unexpected. See, that's the reason why sometimes we have to have the resources or strategies to address the known stress also, and sometimes also have that resilience and the inner strength to manage the unexpected or unknown stress also. So both should be the part. Okay, and that's what sometimes she had few things where she knew that what is the problem, but there are few things which sometimes patient may not be able to know. And when we do this therapy, like especially when we do hypnotherapy, we try to go into the deeper into the subconscious mind, and then try to know what is the cause for this problem, and then try to address that. Isn't it? So you can sometimes there are known stress, there are unknown stress. Okay, and this stress can cause physical disease and also can cause mental disease. And when it comes to treatment, we are treating such patients. There are four basic options that you have in Ayurveda. Okay, ahara, vihara, achara, and aushadhi. Can you repeat? Which are the four? Ahara, vihara, achara, and aushadhi. See, and most oftenly हम क्या करते हैं, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं? औषधि. कोई पेशेंट है, ब्राह्मी लिख दिया, अश्वगंधा लिख दिया, तुलसी लिख दिया, या कोई भी मानस मित्र वट्टी, कल्याण कृता, ब्राह्मी कृता, isn't it? And that is how we try to treat. And when you say Ayurveda is very comprehensive, holistic, but we are just trying to manage only with the medicines. So which should not be done. Okay. Then you should also use the other. ये सिर्फ 25% है, medicines is only 25%. The rest is the diet modifications or the dietary advisors, lifestyle advisors, the psychological support will have the rest 75% of your treatment plans. Okay, and aushadhi also, it's not just medicines. There are Trivida aushadhis. Which are these? Which are the Trivida aushadhis? आप कौन से ईयर के? आप यूजी बच्चे कौन से ईयर के? मिक्स है. हाँ, ठीक है, ठीक है. तो फर्स्ट ईयर वाले एक बोलेंगे, सेकेंड ईयर वाले और एक बोलेंगे, थर्ड ईयर वाले और एक बोलेंगे, 3 हो जाएगा. हाँ, वो सब बोलेंगे. Which are the classification of aushadhi? दैव व्यापार है, युक्ति व्यापार है और सत्तावचन. Very good. उसको फिर से क्लैप करो यार. Yeah. So basically we have, when you say aushadhi, it is yukti vyapashraya, daiva vyapashraya, and sattva vajaya. See, suppose a patient is coming to you in your clinic. आप युक्ति व्यापाश्रय कब अप्लाई करोगे, दैव व्यापाश्रय कब अप्लाई करोगे, और सत्वावजय कब अप्लाई करोगे? Suppose you are sitting in your OPD, okay, and patient is coming to you, and you have 3 choice. Choice of Yukti Vipashraya, choice of Daiva Pashraya, and choice of
सत्ववचा, कौन कौन से कंडीशन में कौन कौन सा ऑप्शंस ऑप्ट करोगे आप? वेरी गुड. When there is a known cause, then नहीं, सिर्फ एक पॉइंट नहीं, एक पॉइंट है और दो तीन पॉइंट है. When there is a known cause, you are able to understand the manifestation of the doshas, able to create the samprapti, have the karana karya siddhanta applicable. Then you can always use yukti vipasha. But if you are not able to understand the exact cause of a disease, you are not able to understand the doshic pattern. Okay, you are not able to understand the Karyakarana Siddhanta, why it is happening. Okay, then you can always use Daiva Pasha Chikitsa. That is why Yukti Pasha Chikitsa is Dosha Pratyanika Chikitsa and Daiva Pasha Chikitsa is Vyadhi Pratyanika Chikitsa. It is based on some disease like Jwarahara mantras, okay, or Kushtahara homas, etc. They are very specific to a particular disease, not to a see. Even in allopathy also, there are many things which is not known. आप कोई भी पैथोलॉजी के बुक्स देख लो, सबसे पहला सेंटेंस क्या रहेगा वहां पे? या idiopathic, and that is what is mentioned when the cause is not known, because very few things that we know. Pratyakshami alpam. So what we know is very meager or very minimal, because there are many unknown factors which could be the cause. And Ayurveda goes a step beyond. It doesn't just talk about this janma, but also talks about पूर्व जन्मा as a cause of disease. इसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे? अगर कोई पेशेंट आता है तो उसका प्रॉब्लम इस जन्म का है कि पिछले जन्म का, आप कैसे एनालाइज करते हैं? ओपीडी में, इन योर ओपीडी, इन योर क्लिनिक्स, क्योंकि हमारा टॉपिक है क्लिनिकल अप्रोच टू स्ट्रेस. So how do you analyze that the cause is of this janma or the previous janma? Unknown cause. Very good. See, Purva Janma is relatively a concept which tells you that the cause is not known, easily known. That's it. See, and the Purva Janma. See, one more understanding of this Purva Janma is, what is Janma? What is Janma? Janma is birth. And what is there before Janma? Rebirth. See, birth से पहले conception होना चाहिए, pregnancy, isn't it? So the entire phenomena starting from the preconception, conception, pregnancy also can be considered as purva janma, janma se purva. Okay, so it can be a different way of understanding when you are not able to understand the exact cause in a clinical setup. But there are some causes which will be the main factors affecting the patient. And try to address this by various, like mantra, aushadhi, mani, mangala, bali, homa, niyama, prayashchitta, pranipata, gamana. All these are therapies or the options that we have. But it all depends on the patient's faith. The patient's faith is very, very important in Daiva Pashraya, or at least the people who are performing. But they should perform it. Okay, just like some practice, that's it. Just as the rituals, आपको करना है बस. Sometimes मम्मी पापा बोलते थे ना, ऐसा क्यों है करके, if you ask they will not, नहीं ऐसा ये नहीं पूछना है, ये करना है बस. That is how diligently they should be able to do all these things to get the benefits. And when the cause is from the psychological, when there is the mind which is the cause, then we use Sattvaja Chikitsa. Okay? Ahitebhyo, Arthebhyo, Manonigraha is what we do in case of Sattvaja Chikitsa. It is mainly for the Manasika doshas. See, again, there is a beauty. In Sharirika, we have Vata, Pitta and Kapha. And we call them as Tridosh. In Manasika, there is Sattva, Raja and Tama.
And we don't call this as Tridosh. We call this Triguna. Vata, Pitta, Kapha are Tridoshas. Sattva, Rajatama are Trigunas. Why? Why this partiality? Because Sattva will not cause disease. Okay? Only the Rajas and Tamas will cause disease. What is the meaning of dosha? What is the definition of dosha? मतलब जो दूषित करे. सर सर दोष वो होता है जो जिसके विकार से हमारे शरीर में कोई चीज दूषित हो जाती है. ये कहाँ से? ओके ओके. गुड गुड. Can you please repeat? दोषयंती अति दोषा. दोषयंती नहीं, दूषयंती. दूषयंती अति दोषा. यस सर. हाँ जो दूषित कर देता है उसे दोष कहते हैं. हाँ. इसका मतलब है वो बैड बॉय है, बैड बॉय. यस सर. यस. वाता पित्ता और कफा और नो बैड बॉय. सर, नो. बैड बॉय नहीं है. यहाँ पे है ना, is stress bad or good? Is dosha bad or good? सर इट इज अ वे टू करेक्ट आवर बॉडी. सर दोष गलत नहीं है. See, if you define dosha as that entity which causes the dushana of the body, then it is always bad. इसका मतलब है कि there is no prakrita karma of vata pitta and kapha. Yes, this is right, but not in all the conditions, because basically उसका क्या function है dosha का? Yes, it is to maintain the homeostasis or equilibrium. When it is abnormally vitiated, then only it can cause a disease. Okay, so it is not an it is an entity which is going to maintain the body. इसलिए दोष को भी धातु is the dhatu is also synonym. They say that dosha can also be told as dhatu because it maintains, it supports. But in manasika doshas, it is only rajas and tamas, because sattva is not the factor to cause the disease. Right? Anything else? Any other classification of disease treatment? See, Yukti Upasana is again divided into Anta Parimarjana, Bhai Parimarjana. Third, Vinayak Sir ka department. Shastra Pranidhana. Okay. Again, it's an indication. And then also the Shodhana is there, Shamana is there. Okay. So you should know the different options that you can have for treating different conditions of the disease. Right? Yeah. Next slide. See, this is a beautiful quotation that you should always. The only person without stress is a dead person. जो जिंदा है उसको स्ट्रेस होना ही है. Starting from birth till death. From pediatrics till geriatrics, a person will always have stress. But it can be of different kinds. The stress for a children is different. The stress for example, आपके टीचर्स का स्ट्रेस अलग है, स्टूडेंट्स का स्ट्रेस अलग है, बट सबको स्ट्रेस है. Everybody in this hall is having stress. Okay, and especially you should please read. Those who are interested to know about stress should study about this person called as Hans Sally. सब लिख लो. All of you write this about Hans Sally. He is called as the father of stress research. जो भी basic research हुआ है ना on the basic pathology of stress, how stress causes different diseases. Stress से BP कैसे होता है, stress से sugar कैसे होता है, stress से psoriasis कैसे होता है, उसका जो fundamental understanding है was postulated by a very famous endocrinologist who was basically from the Hungary.
Irish Hungarian endocrinologist by name Hans Sally. Okay. So he has given a very nice lot of basic understanding. One of them is called as GAS, General Adaptation Syndrome. Is the concept or the theory postulated by Sally. And he says that the stress will occur at three levels, at three stages. The first stage is the stage of alarm. When ganti bajta hai, that yes, so take care, something is going out of way. It's the time that you should try to take care of yourself, where there are some initial signs of something going beyond your control, and that is called as the sign of alarm. Next, you have the sign of resistance or the stage of resistance, where you try to adapt to the stresses. You know that there is stress and you try to adopt it. You try to manage it. But then sometimes what happens, it becomes so severe that it goes to the stage of ultimate exhaustion, where you are having the vulnerability for causing various physical and mental disorders. And that is how, starting from the initial stage of alarm, then the resistance, once it comes to exhaustion, you get various kinds of diseases. And this is a very, very beautiful concept, a very fundamental concept which has been postulated by Sally. Okay, I've just given you very briefly. You please make note of this. आपको क्या नोट करना है इसमें? हैंड सैली के बारे में नोट करना है, जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम के बारे में नोट करना है, and these three important stages, how it causes. I will show you a short presentation how it actually happens. Next slide. Okay. According to me, the best definition of stress is speed. Speed अच्छा है, स्पेशली फॉर यंग जनरेशन स्पीड तो बहुत अच्छा है. नहीं, हम भी यंग हैं, उतने यंग नहीं है हम. यस, स्पीड इज गुड. बॉयज, गर्ल्स, नो, स्पीड नहीं चाहिए. सी, स्पीड इज गुड till what? Speed is good when it is under control. See, जब तक आपको, स्पेशली वांट टू राइड समथिंग, नो, बाइक है, कार है, कोई भी बस है, ट्रेन है, कुछ भी, नो, when that is under your control, it gives you some pleasure. But when it goes beyond your control, क्या होता है? Accidents, isn't it? The same thing will happen with stress. When you are having the control over stress, your performance will increase. When it goes beyond your control, it causes various types of disorders. Okay, so this is, according to the students, this is the best way of correlating this stress would be with speed, right? Yeah. Next, coming to the fundamental, very fundamental basic question of what is stress. Next slide. See, the reaction of the body to any change, either it could be internal change or external change. According to the Stress Management Society, a situation where demands on a person exceeds person's resources or ability to cope. The simplest way of defining stress is when the pressure is more and resources are less. When P is more and R is less, it causes stress. Okay? Demand and pressure is too much on a higher end. It is upwards. And the resources are going down. Your ability to cope up with that is going down. आप उसको handle नहीं कर पा रहे हैं. Then you get stressed. So this is the only definition of whatever the biggest people can speak about hours together about stress, ultimately comes to only this. There can be nothing beyond this in defining stress. When the when the pressure is more and the resources are less. And that is why there can be only two things that we can do with stress. Either you should reduce the
pressure or demand, or increase or improve your resources. That's it. There can be nothing else. Ultimately, अगर आपको एक मिनट में stress management का workshop करना है, you should say that when P is more than R, you have stress. When R is more than P, is stress. खत्म. Finish. They can see what all these other things what I speak is just supporting this. Otherwise, the very fundamental core principle is you should be able to reduce the stress, and you should be able to, and very often we will not be able to see अगर exam है, exam is your pressure. आपके प्रिंसिपल एग्जाम थोड़े ही बंद करने वाले हैं. आपके प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं और कम कर भी सकते हैं, but not all. See, there are some countries, there are, because I extensively travel to different countries. I have traveled more than 16 countries for consultation of Manasaroga. And there are some countries where they have the choice. मुझे 5 subjects में से सिर्फ 3 नहीं लिखना है, 2 नहीं लिखना है. They have the choice. And that is what is the new medical education, or the NEP. The National Education Policy talks about multiple entry, multiple exits, where you can have your own, at your own pace. But again, that is, it takes some time. But basically, there are few things which you cannot manage. But always you can improve your ability to cope up with that. Your resources can always be enhanced. Okay? So all your efforts should go in improving your strategies to manage the stress. Right? Next. Okay, there are different kinds of stress. As I already said, positive stress, negative stress. There are acute stress, episodic acute stress, chronic stress. And there is one, again, those who are interested in knowing types of stress, please read about this particular person called as Carl Albert's model, which has types of stress, which has 4 main types: time stress, anticipatory stress, situational stress, and encounter stress. Right? So these are the 4 things. See, again, very important thing, when the health dispels into disease, कब स्वस्थता रोग हो जाता है. Okay, so we have Dr. Manjunath from Swastha. We have Dr. Hiraman from Mansa Roga. ये रोगा कब स्वस्थता रोग कब क्या बनता है? The main factor is the stress. Isn't it? See, whenever you are not able to handle, when you are not able to handle your routine, okay, and that's the reason why Ayurveda also tells 3 basic things that supports your routine. Trayopastambhas. Which are those? Which are the Trayopastambhas? Ahara, Nidra, Brahmacharya. अगर ये उपस्तंभ है, तो स्तंभ कौन सा है? वाता पित्त कफा. या आहार कौन सा दोष को स्तंभ करता है? कफ को. आहार और कफ का है यार. आहार is related with which dosha? Pitta dosha. Digestion metabolism is related with pitta dosha, isn't it? Nidra, kapha dosha. And brahmacharya, vata dosha. That is why they balance each one of them in systematic way, and then rest sustains. Right? When you're not able to, that is why give a lot of importance for ahara, nidra, and brahmacharya. See, and brahmacharya is not about sex, right? Brahmacharya is all about moral, ethical living, including the sexual practices, of course. But it is not just about brahmacharya, should not be told as celibacy or just as a sexual practices, right? Next. Yeah. See, this is the basic pathophysiology, how exactly the stress will cause different kinds of diseases. So to begin with, there will be mild demands or situations which will start up, and then gradually it goes on increasing. The arrows goes on
shooting, and it disturbs various phenomena like autonomic nervous system, visual nervous system, aging, immune system. See, there is a concept called as psychoneuroimmunology and psychoneuroendocrinology. Have you heard about this? Psychoneuroimmunology or psychoneuroendocrinology. And this is the concept. अगर आपके psychology में कोई disturbance है, it is going to disturbance mainly three systems: nervous system, immune system, and endocrine system. So that is why many of the patients coming with endocrine disorders like thyroid disorders will also have some psychological problems. Like hypothyroidism patient will have depression, thyrotoxicosis may have anxiety, mitral valve stenosis can have panic attacks. So these are the people why they will have these other symptoms, because it also affects other basic systems. So whenever there is some stress or psychological problems, it will affect mainly three systems. One is central nervous system, endocrine system, and immune system. Okay, and many of the diseases like Vishado Roga Vardhananam. Why? Because immune system is getting hampered there. Next. And as I said, all these emotions are very good. See why, how fear can be good, or how grief can be good. See, why did I say this? Why these emotions are, I say these are good. But why they are good? See, why these emotions are good? Suppose there is fear, there is anger. Very good. This is a way of relieving, and also it will test yourself. What is my capacity to handle? How can I handle? What is my resources? मैं कितना handle कर सकता हूँ? How much of that I can handle? Can be known by, and that is why, see, if you look at most of the Ayurvedic diseases, संहिता में आप कोई भी disease देखो, mainly we have three categories of disease, three causes: Aharja Nidana, Viharja Nidana, and Mansik Nidana for every disease. Because this stress can cause any number of diseases, right? So what time should I stop? Anupama madam? हाँ? नहीं, मेरा फ्लाइट कल दोपहर तक है. चलाएंगे, मुझे चलना है ना. See, this is what one very important thing I've learned from traveling to different countries is respecting your time and others' time. You should always respect that, and time again can be a very important factor. See, सुबह 9 बजे का कॉलेज है, आना है, वो है सबसे, especially female will have the biggest stress through that. I don't want to take my stress and I want to give stress for you. Yeah, 15 minutes. Hira मैंने decide कर दिया, sir आप 15 minutes में, okay? So now it's 3:05, we'll stop by 3:20, right? See, it can lead to different organs. The stress can cause problems in any organs, like skin, any disease, one disease for each of these organs, which is because of stress. Skin, कौन सा skin problem बहुत stress से होता है? Eczema, psoriasis. Psoriasis, you see, you ask the patient, सब जब भी मुझे stress होता है, मुझे ये problem. जब भी मुझे asthma ज़्यादा होता है, is because when I get stressed, right? Then heart attacks, isn't it? Then stomach, gastritis. You see very commonly, most of the people, whenever they have stress, they will have gas. Right? Next slide. Next. Okay. See, this spectrum, why I'm showing this spectrum is, this problem can have affect any organs and any age.
It can affect the children, it can affect middle age, it can affect male, it can affect female, it can affect the old age. Anybody can be affected by the stress. See, we always felt that stress is only for elderly, only for adults. Now you see that lot of young children have a lot of stress because earlier the school going was considered to be the no stress. अभी तो इतना स्ट्रेस है स्टूडेंट्स में एंड पेरेंट्स के लिए both of them are, and you might have seen so many incidents. See, I think it was in Uttar Pradesh or some Rajasthan, very 2 or 3 weeks back. A boy, no, was told to go to tuition, and he was not interested, and his parents forced him, and he hanged himself. And his father was working in some military, and he could see that there's a CCTV camera which was there in his. He called his wife that he's doing such things. But by the time she went and tried to rescue, he died. See the problem, आपका कौन सा generation है? Zanzir. What is so special about this generation? पागल होते हैं. the the biggest, see, they are very very creative, they're very tech friendly, they're very very fast learners, excellent, ये सब. But sometimes they don't know how to handle failures and they don't have patience. So these are the two very important things that you should develop to manage your stress. एक, have some patience. स्पेशली अगर आपको पेशेंट चाहिए क्लिनिक में तो पेशेंस होना चाहिए. विदाउट पेशेंस यू विल नॉट गेट पेशेंस इन योर लाइफ. एंड सेकेंड थिंग इज, इफ एट ऑल देयर आर सम फेल्यूर्स, सी इफ यू लुक एट द ऑटोबायोग्राफी और आपको ऐसे मोटिवेशनल स्टोरीज यू शुड रीड, like those who have some amount of failures. So you take any autobiography, you take, like, for example, Apple ka, any Oprah Winfrey, KFC, all these people had initial failures. So they were never respected for their work. But they have set their own mark in their own fields. That is because of the, see, there's something called as bouncing back. Bouncing back, again, no, मुझे नहीं हुआ तो I should do it better next time. And that is the biggest skill that we lose. The present generation do not have this skill of bouncing back. So अगर आप बॉल ऐसे नीचे डालते हैं तो क्या होता है? It comes again and again. जितना आप जोर डालोगे उतना जोर ऊपर आएगा. The same thing should be with you also. You should always, if at all there is any difficulties, you should not take this as an end. Sometimes we make mistakes. Prajnaparada is one of the cause for disease. But you should learn from this mistake. See, I always tell this. Mistake is a very big mistake when you don't learn from mistake. Maro. See, suppose you fail in the exams. Suppose you fail in the exams. See, you should always know, why did I fail? I didn't study well. I didn't write all the questions. I misunderstood the questions. You should always know why I'm doing this, right? And there's n number of diseases which can come because of stress. Okay? Starting from asthma, constipation, depression, diabetes. See, at present I'm treating the superintendent of police of our district. He always says, Dr. Suhas, my diabetes is not in the pancreas, my diabetes is in my stress. Whenever there is any severe problem in the city, my stress level goes up, and this invariably increases my diabetes. It is very obviously, evidently seen in the clinical practice. Next. Okay. See, basically, as I think already Dr. Hiraman has briefly touched about how do we approach stress in Ayurveda. Basically, different kinds of klesha, different kinds of
And that is why different bala, Ayurveda has talked about different kinds of bala. Sharirika bala and mansika bala. And there's something called a sattva pariksha. See, everybody will not react same thing for a situation. Which, see, you could have seen in classes also. Every student will not react in the same way in the person. Okay, right? And then you have upadhi, you have different kinds of dharane vegas and the hina, ati and mithya yoga of kala, artha and karma. Right? See how this disease is caused. See, this is a simile which is given in Ashtanga Hridaya Sutra Sthana called as Tapta Gateriva. Tapta Aja Gateriva means the, the ghee and the pot. If the pot is hot, it will make the ghee also hot. On the other hand, if the ghee is hot, the pot also will become hot, which means that the body and mind are interrelated. अगर कोई भी आपको ओपीडी में पेशेंट्स आता है तो हाउ विल डिफरेंशिएट कि ये शारीरिक रोग है मानसिक रोग है पहले इंटरनेट देखिए that is what see this classification is only textual classification see, there is no compartmental differentiation between body and mind in a clinical practice see, they do not exist separately the body aisa hai mind this is the compartment of body this is the compartment so that is why every time patient who comes to you though it is psychological patients will have some somatic component sometimes somatic disease will always have the there is one very nice quotation in Charaka Vimanasthana echa vikaraha paraspara anuvartamanaha kadachit anubadhanti kamadayo joradescha which means that the body and mind will always be interrelated, whether it is in health, disease, or in treatment. And the same thing happens in stress also, right? See, how do you analyze that? See, especially in country like India, people will never say that I have psychological problems. कोई भी डैड से आपको कोई भी अगर आपको उसको जॉइंट प्रॉब्लम है वो जॉइंट प्रॉब्लम है करके बोलेगा हेडेक है हेडेक के बट सपोज ही हैज डिप्रेशन he may not tell you that he has actual depression. You have to evaluate that sometimes by looking into his mood, by looking into his voice, by looking into his facial expression, you have to indirectly understand that there is some psychological problem. And that is the biggest challenge. जो साइकियाट्रिक के ट्रीट करते हैं ना उनको कभी इन्वेस्टिगेटर भी बनना चाहिए सीबीआई ऑफिसर भी बनना पड़ता है दे हैव टू बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंस बिहाइंड द स्क्रीन एंड यू हैव टू इवैल्यूएट दोस थिंग्स and that is why there are various things that can happen. No? Sometimes there could be marital conflicts. Sometimes there could be Sukumara itself. Okay. Sometimes there could be some anticipatory stress. So all this can lead to various kinds of stress-related disorders. And most importantly is, next slide please. Most importantly is to identify the cause and treat the cause. Why a person is having this problem? The problem is with the relationship, the problem is with understanding, the problem is with communication. So try to understand that. And that becomes the major. See, recently we got a patient who was alcoholic and he has divorced in 5 days. The couple got divorced in 5 days. No, out of the way I should have not asked this, but I asked this. आप लोग ना ऐसा क्या अंडरस्टैंड और मिसअंडरस्टैंड हो गया 5 दिन में that you have to divorce again I told the same thing this is about speed it is so fast
And that is why, see, nowadays, one of the biggest challenge that we always have is the increased cases of divorce. One is infertility, other one is, if at all they get married, they have this issue with the divorce, right? Next. And there are various factors, physical factors, psychological factors, time-related factors, which can lead to. And most important in Ayurveda is the Agni and the Ojas are very, very important factors why uh, different people will have different kinds of diseases. Next. And how it affects, it may see at all these factors is going to hamper the Agni and causes various physical and psychological disorders. Next. So there are 4A in managing stress. I told that there are two causes and there are 4 answers for this. Either you should change the situation or change the reaction. For changing the situation, you have A, avoid and alter. And for changing your reaction, you have to either adopt or accept. There are only these 4A, which is a solution for any of the stress in your life. There cannot be anything beyond this. Either you have to change the situation, which is sometimes not possible. कि आपको college आना ही stress है. You cannot, either you should change the college. Or sometimes talking to my boss is always stressful. Either you should change or you should change your boss. And every time you cannot change your boss. Okay, boss पे चलेगा. अगर wife or husband का हो गया तो, and every time you cannot change. See, that is why they change. See, you know why frequently these people in the West they change is because of this. This concept is applicable, but we are being in Bharat, we have that moral or ethical bonding, more than ethical, familial bondings, social bonding sometimes. In some other way, it is drawing a limitation, so it is drawing a boundary for us. We have some boundaries. Though we try to cross these boundaries, but sometimes these cultural practices, deep-rooted heritage is a very, very important, and that's why we should not leave these cultural practices that is defined in our heritage. Next. So this is what three basic treatments. I'm not going to talk because I think Dr. Hiraman has already touched about these evidence-based practices. Next. So quickly, whenever you're talking about treatment, always focus on diet, lifestyle, psychological support, and the medicine. Right? Next. The treatment can also be classified as Dravyabhuta and Adravyabhuta Chikitsa, pharmacological treatment and non-pharmacological. See, what I told, I gave the example of this patient whom we treated. And I said, not even a single tablet, that we have used. We used the only exclusively Adravyabhuta Chikitsa in this patient. Next. So this is the principle where we can always try to follow in stress-related problems. Dosha kshinaha brahmitavyaha, kupitaha prashamitavyaha, vriddaha nirvatavyaha, samaha paripale iti siddhantaha. This is from Charaka Chikitsa Sthana, sorry, Shushruta Chikitsa Sthana, 33rd chapter. Next. See, how to apply this siddhanta in stress-related disorders? Something is reduced, we can increase. Something is already increased, you have to reduce it. Next slide. The treatment principle that we follow is Deepana, Pachana, Snehana, Svedana, and Shodhana. And we can summarize. Next slide. Next slide. Okay. So basically, when you want to treat stress-related disorders, Sharika dosha should be addressed, Manasika doshas, Tattva, Jnana, Agni, Dhatu, and the Ojas should be addressed. Next. Basically, this will have different treatment should be adopted. Dietary, lifestyle, yoga, pranayama, etc. Especially when there is chronic disease, chronic stress-related disorders, always apply the Panchakarma treatment. So Panchakarma is applicable when there is severe problem and when there is chronic problem. So these are two indications of Shodhana. Severe, chronic. Next. External treatments also. See, in fact,
Yesterday, we have inaugurated a wellness center, okay, especially focusing on this wellness treatments like relaxing therapies, massages, different kinds of foot massage, head massage, reflex massage, marma massage can be used for the treatment. Abhyanga is a wonderful stress-related therapies. Next slide. See, we have made some modifications also, making combinations of Snehana and the Murni Tailas. And this is called as the Shiro Mardhana, where we are trying to make a potali out of the Brahmi, Sarpagandha and Jatamamsi and apply it especially for insomnia. And again, there can be Ruksha Mardhana and Snigdha Mardhana based on the doshas. Next slide. One more alternative for Shiro Basti. So suppose you are not able to do about Shiro Basti, you can do Lalata Basti by using Grita instead of the Tailas, like Brahmi Grita, Kalyanaka Grita, Lashunadi Grita, Paishachika Grita, Purana Grita can be used for, as an alternative for the Shiro Basti. Naso hi Shirso Dwaram. You have a lot of Nasya, Dhuma, Anjana. They are very good therapies for psychological disorders or any stress-related disorders. You can use very effectively in the management of various psychological disorders. Right? Next. I think already Dr. Hiraman has talked about in detailedly about these practices. I'm not going to touch this. Next slide. But clinically, we can use these gritas based on doshas. Like for Vata dominant symptoms, Kalyanaka and Mahakalyanaka Grita can be used. For Pitta dominant conditions, you can use Kushmana Grita, Brahmi Grita. For Kapha dominant symptoms, you can use Panchagavya Grita and the Mahapanchagavya Grita. There are various other conditions which I'm going to skip, like anorexia, menopausal symptoms. Next slide. Depression, mental retardation, aneurysms, stammering, mutism, alcoholism, where you can use different kinds of medicines, okay, which you can always study. Yeah, I'm going to keep the slides with the organizers, so you can use these slides because these are not my slides, but what we have done in our department, and from most of them are the classical medicines. Okay, this is from the basic text, so there is nothing that we have developed or something we have done. Okay, only we have tried to practice and probably sharing our clinical experience. And last three slides are very, very important. Okay, it is the what my team. I think most of what we have studied in our legacy of SDM Hassan for last 25 years. We are just summarizing what we have done in our institute. One of the very good medicines that you can use in stress-related disorders or Manasroga in general is Purana Grita. Purana Grita is one which can be kept for 1 year, 3 years, 5 years, etc. But at least if it is kept for 1 year, you can treat many of the chronic diseases like depression, bipolar disorders, schizophrenia can be very effectively be managed. Next. Next. See, very, very important is you should also know the basic modern pharmacology when you're treating modern psychiatry. Because sometimes what happens, patient is already on medication. 70 to 80% coming to a Manasaroga patients will already be on some medication. So always try to use some rasayanas, some agada prayogas, and don't stop the medicine. And sometimes you should also know when to add the medicines, when you should not add. Like for example, a patient of depression who is on monoamino oxidase inhibitors, you should not add Grita because it will cause hypotensive crisis. Immediately the patient will go into hypertension and patient will cause unconsciousness. So this is what you should know, the basic pharmacology, that some conditions will always not match with the clinical practice. Always you should know when to add. That is why drug-drug interaction and drug-herb interaction is a very, very important thing. Just don't think that kuch bhi chalega, kuch bhi add kar sakta hai. It is not like that. The same thing is with all other diseases, like in diabetes, hypertension. You should know where to combine, when to combine, how to combine Ayurveda and the modern treatment. So how to integrate.
you should have, and that is why the basic knowledge of drug-drug interaction and drug-herb interaction is very, very important, right? And that is why this is the vihara that you can always suggest. I'm not going to talk much of that, but very important is the diet. The diet and mental health, diet and stress is very, very important. Next thing. And the food is not just for the stomach. Even the brain also needs some food. The mind also needs some food. The sense organs also need some food. The spirit or the consciousness also needs some food in the form of good thoughts, kindness. So you are helping somebody. Somebody is in, uh, I suppose there was one person yesterday, who was having sudden hypertension. We just tried to help them. And that gives a lot of satisfaction for you. Okay, being a doctor, you help somebody with your skills, isn't it? See, that is also very important for the soul. Foods, different kinds of foods. Rasayanas, no, different kinds of rasayanas, like we have kama rasayanas, medya rasayanas, etc. See, and rasayanas also you can select based on the which component you want to act. Like there is dhi, dhriti and smriti. For dharana, you need the shita virya drugs, like shita virya madhura vipaka drugs. And for dhi and smriti, you need ushna virya and tikta pradhana rasayanas, like guduchi, jyotishmati, etc. So this is what you should try to learn, how critically you can apply clinically based on Ayurvedic pharmacology. Okay, and then when you do it, then you will get very good results also. Next. Daiva Pasha Chikitsa, as I said, is also very, very equally important in psychiatric practices in stress-related disorders, like especially mantra, aushadhi, mani, mangala. See, even this also, no? Like this is a kind of a, how it helps. It's a belief that, okay, God is there with me, my parents are there with me, there's someone who is going to protect me, isn't it? It's a kind of belief that we have. And if you feel that, no, no, I'm not believing in God, that itself is a belief, that I don't believe. Not believing itself is a belief. And of course, psychological, so how do you treat psychological patients, especially to Sattvaja Chikitsa? And this is the counseling part. Ayurveda has a very beautiful, in-depth basics of the psychotherapy and the counseling, called as Sattvaja Chikitsa, Ahitebhyo, Arthebhyo, Manonigraha, which has, next slide, next, next, next. Okay. Like very importantly, these 5 techniques. This is told in Charaka Sutra Sthana first chapter, Manaso Jnana Vijnanam Dhairya Smriti Samadhibihi. You can use different insight-oriented therapies, supportive psychotherapies, philosophical supports, which are very, very important. Next. There are various yogasanas which has been mentioned for stress-related disorders which you can practice. My last message for you is there could be so much challenges in your life. There could be so many problems in your life, but never quit the life, because life is a very, very beautiful gift that God has given us. It is very important not only for you, but your family and friends. Always remember that there are people who are always connected with us. Okay, so don't try to, because of, see, अगर अगर रास्ते में अगर कोई hump आता है या खड्डा आता है, do we stop our vehicle? We slow down. We slow down. We pass that. Again, we speak the speed. And life is also sometimes there is some amount of risk, failures, difficulties, and that is the beauty of life. अगर हमको पता है कि बहुत प्लेन एक्सप्रेस हाईवे है, वहां से लखनऊ से यहाँ तक was very good, but last 30 minutes was really challenging, and that is the beauty of the life. अगर ऐसा ही है तो it becomes very boring, no? And that is the reason why I always say this: uncertainty is the beauty of life. If everything is certain कि ऐसे ही हो, आप कितने में पढ़ो आपको 55 मार्क्स आएगा. अगर आपके टीचर से डिसाइड कर लिया आप पढ़ोगे क्या? नहीं, आप अच्छे बच्चे हैं, आपके कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ.
मैं जनरली बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारी जमाने वाली बात। हम नहीं पढ़ते। देखो हीरामन बोलेगा देखो पहले भी हम नहीं पढ़ते थे, अभी नहीं पढ़ेंगे, isn't it? So this definitely, if everything is fixed, so that is why there always be some amount of uncertainty in life. कल क्या होने वाला है? So that's the reason why always make the best, because see, my teacher always used to say, always if you think of past, आपको depression आएगा. If you think of your future, anxiety आएगा. So always be in the present. Then you will be able to manage yourself, right? So with this, I would like to once again thank the organizers, and then there are some additional things. Just, just a summary of what various research that we have done in our department, like single herbs. Next slide. And next, how we, I've just, based on my clinical experiences, I've just summarized how do we treat psychotic disorders, epilepsy, anxiety, depression, insomnia. In next. Okay. So we have just summarized the disease, what kind of shodhana, what shamana, what sattvaja chikitsa in Unmada, next slide, in Apasmara, in Nidranasha, in Maya, in anxiety, in depression. Right? So prevention, no? Prevention is very, very important factor. And we use this model called as ABCD 4321. Next slide. A, away from distractions, especially for students, mobiles. You use it, but use it with some purpose. Be organized. Be cheerful. And at least 20 to 25 minutes of daily exercise. Because exercise is very, very important. Because that brings you a lot of activities, endorphins, chemicals, etc. Next, 4 liters of water. I'm not in 4 liters, but plenty of water, because that detoxifies yourself. It depends upon the season, region, etc. 3 times timely sattvic foods, 2 times of prayer, and at least have 1 recreational activity. What is recreational activities? Anything जो आपको करने से मजा आता है. तो मुझे स्मोकिंग से मजा आता है, हाँ, अल्कोहल से मजा आता है, ऐसा नहीं. See, that is why people are addicted to that, because उनको वो करने से मजा आता है. Okay, find out some positive reinforcement which is going to empower yourself. Okay, like for example, drawing, singing, going for a walk, going for outings, spending time with, talking to your parents, talking to your friends can always be a stress buster. Nityam hita ahara vihara sevi samikshakari visheshu asaktaha dataha samaha satyaparaha क्षमावान आप्तोपसेवी च भवन्ति aroga. Thank you very much. I'm sorry I extended by another 10 minutes, but with the permission of chair, if there are 1 or 2 questions, 1 question from this row and 1 question from this row, Sir, we have interaction sessions, sir. So students will be asking questions. because my flight is tomorrow. There'll be questions. Thank you very much, sir. Actually, your presentation made me, it took me back to my PG days, sir. This is how our teachers used to take lecture, and it was very mesmerizing, sir. Sir, your words have clearly highlighted how stress affects body and mind. I'm sure students have gained a lot of knowledge from your presentation, and from your session, we have learned how focused psychological approach alone can bring remarkable clinical improvement without the use of any medication. Let us try to apply this knowledge in our clinical practice for better mental health. Thank you, sir. Now, before starting with the interactive session, we have a guest among us. Uh, for him, I request
our Dean Sir to welcome Mr. Nikhil Sachan, founder and CEO of Career Kick Services, to honor him with bouquet. Dean Sir. Okay, coming back to the session. Now we have an interactive session. I request, I request our panelists to kindly put forward the questions asked by the students to our research person, Manas sir. Manas sir will be asking the question. Sir, Manas sir के पास. यहाँ नहीं. So the first question is, the first question is impact of chronic stress on immune system and its management, or immunity and its management. Yeah, as I already mentioned about this psychoneuroimmunology, if at all there is any psychological problems, it will have the impact on various systems. And mainly, as I said, the central nervous system, the endocrine system, and the immune system. And what happens is, especially the various cells, the immune related cells, because they also need some kind of the energy. And this, when you have the different kinds of ATPs are properly produced, and whenever there is a stress, the production of these ATPs are reduced, and that is where their immune complex becomes reduced. The proper functioning of their handling the giant cells, the blastocytes, the lymphocytes, their functioning gets hampered, and that is where it can lead to various immune suppressant type of conditions. And same in Ayurveda, where there will be Ojokshaya. Ojokshaya is the main reason, and in that also you see that there is Aharja Nidana, Viharja Nidana, and Manasika Nidana, especially the Chinta, Bhaya, and Krodha are the main factors why there is a Ojokshaya. Like Ojokshaya, Ojovisamsa, Ojovapat, all three conditions, there is psychological disturbances. Thank you, sir. The next question is stress and depression the same? How can, if not, how can we differentiate it? See, basically, stress is a very, very big umbrella. No, very big umbrella, which can lead to various types of disorders. It can lead to physical disease, it can lead to mental disorders, it can lead to various kinds of psychosomatic disorders. Whereas among them, among various types of psychological disorders, depression is one among them. Depression comes under the category of mood disorders, where there is low mood, low energy, people do not want to mingle with others, they want to stay alone. And very important symptom in depression is anhedonia. Anhedonia is where a person starts losing the interest in life. पहले मुझे मूवी जाने में अच्छा लगता था, पहले मेरे फ्रेंड्स के साथ डिनर करना, पार्टी करना बहुत अच्छा लगता था. I now I don't want to talk to my friends. This is a very, very important sign. And same thing is mentioned in Ayurveda as the ichha. No, like basically, yatram puram ichham asit tatra anichha bhavati. So all those which you had lot of interest early, you lose your interest. And that is where basically you need some form of motivation. Some purpose, motivation is what is basically required for depression. And most importantly, like some kind of encouragement, some kind of purpose of life is the main reason to manage the. But the bigger umbrella is stress,
And one of the problem that can l- develop because of stress is depression. Thank you, sir. Sir, the next question is, as a student, how do I maintain study-life balance without stress? See, see, the most important thing is you should understand the priority of life. There is a priority of life. What is important? अगर कोई शाहरुख खान का आज मूवी रिलीज हो गया और आज एग्जाम है, एग्जाम 6 महीने के बाद भी आएगा, लेकिन आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो मिस होने वाला है. So you should make a choice. You should always understand what is important in your life. See, for which there is a very beautiful concept in psychology called as Jogren's triangle. Jogren's triangle, which divides your life into 4 circles: important, urgent, important, not urgent, not important but urgent, not important, not urgent. You should divide your activities under which category it falls. And if it, see, a child is also angry. A newborn is also sometimes angry, with his mother. Okay, and especially the elderly, if somebody is there in elderly in the family, sometimes they also can be, have a lot of anger issues. So that is why people say that geriatrics is second pediatrics. Geriatrics is second period because they sometimes behave like children. Okay, so anger is not just for the married or not married. See, basically, as you know, any emotions, any emotions has two outcomes. One is called as reaction, other is called as response. Very oftenly, anger we give reaction, which means that we do something and then probably start thinking. But if you give a pause, maybe like just getting away from the situation, taking a deep breath, just start counting from 100 to 50 or 50 to 100, or like reverse, you can start counting reverse. See, this is very, very fractional, very, very short lived. Just have that sense of pause. See, that is why pause is a very important key in any of the playing rhythm. Just when to stop it, when to mute. Okay, you should learn. And how to mute, you should learn. And then probably respond more than reaction. Because response is when you think and react. Okay, so that is a basic, give a pause. And you should know how to, that 2-3 seconds of pause is what like you should learn in your life. I, I, I reserve my comments. I reserve my comments. See, changing the partners or changing the nidana parivartana. See, that is why, as I said, sometimes you cannot change the situation. You can always change the reaction. Suppose you are not good with your boss or with your subordinates. You cannot change your subordinates or you cannot change your boss. Listen, but you can always change your reaction. Thank you, sir. You had very nicely explained us, and the queries were also cleared by you. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir, for beautifully clearing our doubts of our students and the faculty members. Thank you once again, sir. Now we have one more guest with us, Dr. Indiresh Singh, sir, who is Principal and HOD of in the department Sharir Rachna. He has come from Enkrait Ayurvedic Medical College and Hospital, Lucknow. To welcome him, I request our respected Vice Principal, sir, to welcome him with the token of respect.
Moving forward, now I request one of our panelists, Dr. Balraj Chaudhary sir, to kindly come on the dais and share his view on this national seminar, Ayurveda approach to stress management. Balraj sir. सभी को नमस्ते रेस्पेक्टेड मैनेजमेंट सीनियर्स मेरे सीनियर्स स्टाफ मीन्स और टीचिंग सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया मनो आयतन 25 दूसरी चीज बहुत अच्छा मुझे इसलिए कि आज 20 साल के बाद मैं अपने जो सीनियर से हासन में से यहाँ मिला हुआ डॉक्टर अमरीश सीबीसी सर सुभाष सर मंजुनाथ सर से मैं आज 20 साल के बाद मिल रहा हूँ तो इसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद मिलने का मौका मिला दूसरी चीज जो आज का टॉपिक जो आप लोगों ने चूज किया वो बहुत ही रिलीवेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी आज की डेट में स्ट्रेस से बचा हुआ नहीं है डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास अपनी स्ट्रेस को लेके अगर हम उसको ट्रीट नहीं कर पाते तो हम खुद स्ट्रेस में हमने ट्रीटमेंट दिया पेशेंट ठीक नहीं हुआ वो भी हमारे लिए एक स्ट्रेस है ना दूसरा जो स्पेशलिस्ट है उन्होंने कैसे हमको अप्रोच करना है जो आते हैं पेशेंट्स को कैसे अप्रोच करना है उनको ट्रीट कैसे करना है सर ने बहुत नाइसली सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आयुर्वेद एक घंटे के लेक्चर में सारे रिवाइज करा दिए हम जब हम 2003 में सर कभी कभी हमारी क्लास लिया करते थे हाँ सर में तो वो हम पीछे चले गए उसमें काफ़ी जो रिलेवेंट टॉपिक है वो रहा और दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग डॉक्टर बनने वाले हैं मुझे लगता है कि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में हम साइकेट्रिस्ट देखते हैं मानसिक रोग विशेषज्ञ ज़्यादा आयुर्वेदिक साइकेट्रिस्ट आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी मेरे शहर में तो नहीं है कोई भी मुरादाबाद से मैं आया हूँ तो मुरादाबाद में कोई भी आयुर्वेदिक साइकेट्रिस्ट नहीं है अब हम यहाँ पर सुनने के बाद आप लोगों को ये लगना है आपके लिए एक रास्ता खुल रहा है कि आयुर्वेद में भी साइकेट्रिस्ट अच्छा हम अपने पंचकर्म से योगा से मेडिसिन से एक अच्छा कर सकते हैं और उसके लिए हमारे लिए एक लाइन खुल रही है तो इसी के लिए आप सभी धन्यवाद की बात है थैंक यू Thank you, sir, for your valuable words, sir. Now, coming forward to the scientific session, here we have two clinical sound experts with us, Dr. C.B. Singh sir and Dr. Vijay Prakash Mishra sir. First, I would like to call Dr. C.B. Singh sir to give his view on scientific session, that is reflection and insight on day-to-day practice. C.B. Singh sir, please.
थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स। भाई आप लोग शांत हो जाओ, 15 मिनट दो। मैं कोई, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन केवल मानस रोगा में है। वैसे मेरे साथ एक वरदान लगा हुआ है कि जो मैंने पढ़ा वो करा नहीं। मैंने बीएससी की, काम नहीं आई। एमएससी एंटोमोलॉजी, काम नहीं आई। बीएमएस ज्वाइन की, फिर लोगों ने कहा पीजी भी करनी पड़ेगी। पीजी मिली तो मानस रोगा मिली, मुझे चाहिए नहीं थी। ऐसे इंस्टीट्यूट में था, वहां रहना ही काफी था, तो मैंने एसडीएम में मैं मानस रोगा सेकंड बैच, स्वास्थ्य सर्विस इन फर्स्ट बैच ज्वाइन कर लिया। वहां से ज्वाइन करने के बाद जब मैं बाहर निकला, एक प्राइवेट कॉलेज मेरा टीचिंग में सिलेक्शन हो गया। वो इस शर्त पे हुआ कि आपकी बीवी को पीजी की सीट तब देंगे जब आप वहां ज्वाइन करोगे। का किस्सा मिला मुझे पढ़ाने के लिए। मानस रोगा भाभी काम नहीं है, थोड़ा टॉपिक था। प्राइवेट से निकल के जब मैं गवर्नमेंट में घुसा, डिपार्टमेंट का से ही रहा, लेकिन पढ़ाने के बाद सब कुछ किया। क्या क्या किया? मैं क्लास 3 क्लास 4 का इंचार्ज। अस्पताल की कितनी सफाई होनी, कितनी गंदगी होनी, सब मेरे जिम्मे है। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जानी है एक टीम, उन्हें कुछ सलाह लेनी है, तो पता नहीं कौन मेरी मुसीबतों को जापानी तेल लगाता है, सबसे पहले मेरा नाम आ जाता है। वो लोग भी मानस रोगा की बात मेरी 10-12 साल तक नहीं सुने। वो सरकारी सेवाओं की बात सुनना चाहते थे कि कैसा चल रहा है, क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है। वो जैसा बुलवाते थे मैं वैसा बोलता था। अब जाके कहीं थोड़ा सा असर आया। अब प्रेजेंटली मैं मेंटल हॉस्पिटल बरेली में मेंबर हूं, रोगी कल्याण समिति में। और पता नहीं मुसीबतों में कौन लगा गया भाई। डिस्ट्रिक्ट जेल बरेली, डिस्ट्रिक्ट जेल रामपुर, डिस्ट्रिक्ट जेल एटा, सेंट्रल जेल बरेली, उनकी रोगी कल्याण समिति में मैं मेंटल वाला एक्सपर्ट हूं। अभी रुको रुको भाई रुको। 10-12 साल मानस रोगा की प्रैक्टिस नहीं करी मैंने। अब मुझे बनाया गया लास्ट में एक्सपर्ट, बोले जैसे इसे भी देख लेते हैं। अच्छा, लोगों को नहीं पता था मैं मानस रोगा पीजी हूँ, कुछ ही मेरे दोस्तों को पता था। वहां से लेटर आया कि कोई एक ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो थोड़ा मेंटल हेल्थ के बारे में जानता हो। नॉर्थ इंडिया में ऐसा मानस रोगा का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, इसका एक्सपर्ट भी होता है, शायद पता नहीं है। तो मेरे जो अपने ही थे बहुत नजदीक, उन्होंने मेरा नाम वहां लिखवा दिया। मैंने कहा और 2-4 जेलों में लिखवा देते साहब। सी, दे रियली नीड सपोर्ट। आई हैव सीन पर्सनली प्रिजनर्स जो 20-20 साल की जेल काट रहे हैं। लेकिन जब मैंने वहां जाने के बाद देखा हाउ टू सेपरेट, आइडेंटिफाई दिस इज एब्सोल्युटली मेंटल डिसऑर्डर। क्योंकि वो जेल में बंद है, वो तो ऐसे बहाने बनाएगा कि मैं बीमार हूं, मैं पागल हूं, ये करूंगा वो करूंगा। शायद मैं एसडीएम में एक चीज बहुत अच्छे से सीखा था, एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। क्योंकि हमारे जो सर थे, डॉक्टर नारायण प्रकाश सर मेरे एचओडी थे, वो ये बताते थे कब डायग्नोसिस करोगे। सुभाष सर ने भी बताया था, व्हेन टू डायग्नोस वेदर दिस पर्सन इज हैविंग मेंटल डिसऑर्डर। उसके लिए वो बोलते थे कि कभी फिजिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस। अगर परफेक्ट आती है तभी कुछ आप कर पाओगे, अदरवाइज फेलियर के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो मेरी अपनी काय चिकित्सा क्लास में 6 महीने क्लास इसी की चलती है कि आपको कैसे डायग्नोसिस करनी है। 6 महीने के बाद थोड़ा वो सिलेबस हो पाता है, वो मैं करता हूँ। आज मेरा टॉपिक जो दिया गया है वो मुझे मंडे को दिया गया, साहब मानस रंजन सर हैं, मंडे को मुझे टॉपिक दिया गया। मैंने एक सीनियर से कहा भाई कुछ बना दो। सीनियर काफी गुणी है, प्रोफेसर, इच्छाधारी प्रिंसिपल मैं उन्हें बोलता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ ही रहते हैं। हाँ, मेरे साथ ही रात को सोते खाते सब हैं। और जब मैं सवेरे ओपीडी में लेट पहुंचता हूं तो वो गेट में मिलते हैं, बोले लेट क्यों आया। मैंने कहा सर मुझे पता नहीं था आप ही प्रिंसिपल हो, तो वही अटेंडेंस लगा देता जहां रूम पे हो। तो ये टॉपिक नया था मेरे लिए, मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। क्योंकि देखो मेरे सारे एसडीएम वाले जानते झूठ बोल नहीं पाता मैं।
जो मैं करता नहीं वो बोलता नहीं। अगली स्लाइड करो, और थोड़ी बहुत 2-4 स्लाइडें करो, ये सब लिखी हुई है, कॉपी है। आगे करो। हाँ, डायबिटीज पता नहीं कौन मुसीबतों को बढ़ा जाता है। शहर का जितना भी बड़ा आदमी, एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी, उसे डायबिटीज होती है, और वहाँ बता दिया जाता है एक डॉक्टर सीवी सिंह हैं, एसडीएम से हैं, एसओडी का चिकित्सक है, उन्हें दिखा लो आप। वो फिर आज ही मैंने एसडीएम साहब का फोन आया था, पता नहीं कौन कौन लगा जाता है। इतने क्वेश्चन पूछते हैं उनको, बड़ा जैसे पेशेंट हो आप कुछ ही बोल दो, ऐसा नहीं वैसा होता है, ऐसा ऐसा करके उनको बहुत हम्बली ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि वो कल को इंस्पेक्शन करने आ गए कॉलेज का तो पता नहीं क्या क्या होगा, नाम सब हमारा ही आएगा। एक क्लिनिकल कंडीशन ऑफ डायबिटीज मेल्टस विच सक्सेसफुली ऑलमोस्ट आई एम मेंटेनिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ट्रीट करता हूँ, लेकिन मैं मेंटेनेंस बहुत अच्छा कर रहा हूँ इसका। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही देता हूँ, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है कि मैं इसमें क्या करता हूँ, बट मैं नटसेल उनको बताता हूँ। सर, प्रॉब्लम आप में क्या है ना, जब आपको डायबिटीज नहीं थी तब आप जो चाहो सो खा लो, सब एडजस्ट करता था। अभी वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट फेल हो गया है। अब थाली में एडजस्ट करना पड़ेगा कि क्या क्या खाना चाहिए, उतना ही एडजस्टमेंट जरूरी है। कुछ एक स्ट्रेसेस उन्हें बोलता हूं, जैसे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रेस एंजाइटी रिलेटेड होती है, कैसे मैनेज करें। जैसे गांव के लोग आते हैं, उन्हें लोग बता देते हैं कि यार तुमको बस शुगर हो गई। अच्छा, गांव में जो मोहल्ले होते हैं ना, वहाँ एक मेन आदमी होता तो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, और वो थोड़ा डॉक्टर भी होता है। वो उस आदमी के पास जाता सबसे पहले कि यार ऐसा है कि लग रहा है शुगर हो गई, मुझे डॉक्टर साहब ने बताया है। तो वो उतना डरा देता है उसको कि भाई साहब शुगर हो गई, झूठ में बोले वो देखो ऐसा था, वो मर गया, और ये ऐसा था, वो हो गया, और तुमको बहुत कठिन समस्या हो गई है, गंभीर समस्या हो गई है। ऐसा करो, एक डॉक्टर को मैं जानता हूं, उसके पास चलो, हो सकता है कि वो कमीशन एजेंट हो। इसके पास, उसके पास जाता है या नहीं जाता, जब हमारे जैसे किसी भले आदमी के पास आता है, मैं भला आदमी हूं। देखो, भला के साथ मैं एक और बात बोलने वाला था, मैं तो तीसरा हूं। हमारे हीराबनी भैया स्टार्टर थे, बॉस मेन कोर्स थे, और मैं लास्ट हूं, जो जैसे नहीं स्वीट डिश खाने के बाद बोले सर क्या लेंगे, स्वीट डिश। अभी मेरा एक और छोटा भाई है, हो सकता कोल्ड ड्रिंक हो, तो वो मेरे जैसे लोगों के पास आता है और बोलता है डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है, आप सरकारी में डॉक्टर हो, आप सही बोलोगे, ये बताओ ये शुगर वगैरह ऐसी हो गई है क्या, इतनी खतरनाक होती है क्या, और क्या क्या करना पड़ता है। देखो भाई साहब, प्राइवेट प्रैक्टिस वाले जो लोग हैं वो उनकी मजबूरी है। अगर मैं सरकारी में ना होता तो मैं भी उन्हें डराता, मेरी दवाई ले लो। आयुर्वेद वाला प्राइवेट प्रैक्टिसनर, डोंट फील बैड, मैंने कहा मैं सच बोलता हूँ, आप में हिम्मत होनी चाहिए सुनने की। प्राइवेट प्रैक्टिसनर जो आयुर्वेदिक कर रहे हैं वो इतना डरा देते हैं अपनी 5,000 की दवाई बेचने के लिए कि वो भागता है। फिर वो फिर सरकारी वाले के पास आता है, बोले यार सही से बताओ, उन्होंने तो ऐसे से बता दिया, क्या ऐसा हो जाएगा क्या। वो सब ये सब दे देते हैं उसको, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, या फीलिंग ऑफ ओवरवेल्म बाय द डिमांड ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट, में ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं तो अभी मैं कम उम्र का हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, लाइबिलिटीज बहुत है, उन्होंने तो ऐसे करके बता दिया। और हम पूछते हैं कि उन्होंने फिर इसके बाद बताया क्या, बोले जी बताया कि हमारी 10,000 रुपये मेडिसिन महीने की दवाई खाते रहो, मैं मेंटेन करता रहूंगा। मैंने कहा बस वही कृपा अटकी थी आपकी। आप वो 10,000 रुपये की दवाई के लिए वो ऐसे कर रहा था। सी, क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल मानस रोग की प्रैक्टिस करने से आपका काम चल जाएगा, आपके पास सारे पेशेंट्स आएंगे, आप आयुर्वेदिक फिजिशियन आएंगे। यहाँ नॉर्थ इंडिया में ऐसे आयुर्वेदिक साइकेट्रिस्ट जैसे बहुत फेमस नहीं है। तो जो जो डायबिटीज मेल्टस के पेशेंट आएंगे, आप सबसे पहले वो आपकी परीक्षा लेंगे। पढ़ा लिखा आएगा तो वो और तरीके से परीक्षा लेगा, और जो गांव वाला आएगा वो बहुत अच्छी तरीके से लेगा, वो उसकी बात पहले मानेगा। जो वो चौराहे वाला था, बोले उनने तो ऐसे कही साहब, आप ऐसे कह रहे हो, मतलब आपको इतना इरिटेट कर देगा कि आप बहुत परेशान हो जाएंगे। जब तक आप अपनी रेपुटेशन उससे नहीं बना लेते, शायद मानस रोगा में एक पॉइंट है वो ना, रेपो। पेशेंट को ट्रीट करने के लिए पहले उसकी आपसे उसकी रेपो बनानी पड़ती है, उसे विश्वास ऐसे दिलाना पड़ता है कि नहीं यही सही है, तभी वो दवाई लेता है। ये आज की सच्चाई है। हमारी इतनी औकात है कि आजकल हम MRI लिखते हैं तो करवाता नहीं है, क्यों, हम आयुर्वेदिक डॉक्टर है।
कह रहे आप क्या जान लोगे एमआरआई से, या ये इन्वेस्टिगेशन करा के आप क्या जान लोगे, आप तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो। तो उसको ये बताने के लिए कि ये कंडीशन मैं मैनेज कर सकता हूँ और मैं उस तर्ज पे मैनेज करता हूँ। सी मधुमेह इज मेंशन्ड इन 17 चैप्टर औपचारिक सूत्र स्थान, वो आवरण जन्य वाली, मैं उस सीरीज में उसे मेंटेन करता हूँ मैंने। और यूजुअली मैं नॉर्थ इंडिया की, आई एम सॉरी, आई took birth in North India, but I am a South Indian, proudly says, because मैं वहाँ पढ़ा, मेरा कल्चर वही मुझे अच्छा लगता है, मेडिसिन अच्छी लगती है, झूठ नहीं कतई। हमारी वाली मेडिसिन में सब में 303 कैप्सूल शक्तिवर्धक, अंदर कुछ नहीं। तो जो मैं मेडिसिन यूज करता हूँ वो सब साउथ इंडिया की मेडिसिन यूज करता हूँ इस कंडीशन में। उसके वास्ते पहले अगर उसमें कुछ साइकोलॉजिकल कंपोनेंट घुसा है जो पहले से वो कहीं से लेके आया है, उसको निकालता हूँ, जरूरी है। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइक इन केस ऑफ रीनल मेडिकल डिसऑर्डर। बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं और मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं इसका मास्टर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत डिफरेंस कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे पेशेंट इसके ट्रीट किए हैं, मैं एक दो केस हिस्ट्री भी लाया हूँ। मुझे अगर पहले से बता देते तो मैं और ज़्यादा लगता। वही वही नेक्स्ट दिखाओ। हाँ, ये पेशेंट था, ये ओपीडी इतनी बढ़िया नहीं है साहब, सरकारी कॉलेज है, एक ही पंखा लगा, गर्मी के दिनों बैठना मुश्किल होता है। दिस पेशेंट केम टू मी विथ एक इंटरनली ब्रॉड, ऐसा बोल के आया कि साहब इसकी सिरोधारा करवा दो। हमारे यहाँ ऐसे होता है, जैसे वार्ड बॉय डॉक्टर है, चपरासी डॉक्टर है, और जो इंटर्न है वो बड़ा वाला है, वो हमसे बड़ा वाला भी है। वो मालूम क्या कह देता है कि देखो ये केवल आयुर्वेद ही जानता है, हम दोनों जानते हैं, हम साई हॉस्पिटल में भी रात में बैठते हैं, हम ज़्यादा जानते हैं। तो ये जो पेशेंट आते हैं वो उनकी बात ज़्यादा मानते हैं। ये पेशेंट आया था, उसकी इसकी सिरोधारा करवानी तुझे, कि बोले साहब सिरोधारा करवानी है। तो मैंने कहा रुक तो जाओ, सिरोधारा क्यों करवानी है? तो बोले ना साहब नींद नहीं आती इन्हें और टेंशन करते रहते, बैठे बैठे कभी कभार रोने भी लगते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी मुझे भी मुलाकात करवा दोगे, बात करवा दो। फिर ये पेशेंट मेरे पास आया, ARF का पेशेंट था, एक्यूट रीनल फेलियर, और इसको बता रखा था एक, मैं नाम नहीं लूंगा, बरेली के लोग हो गए पता नहीं पकड़ लेंगे, एक बहुत रेपुटेड डॉक्टर है, वो मेरा नाम जानते हैं, उन्होंने मुझे 2-3 बार गाली भी दी है। मैंने यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल ला दिए, तो वो जो इंटर्नी बोला जाके कि बोले डॉक्टर CB सिंह है, तो बोले कौन है गधा, मतलब बिजनेस मार रहे थे। एक मेरे ब्रदर ही थे उसमें, बहुत रेपुटेड, स्टेडियम रोड पे हॉस्पिटल है उनका, नहीं वहाँ काफ़ी है स्टेडियम रोड पे, आप पता नहीं लगा सकते। तो जब मैंने उन्हें देखा तो वो रोने लगा। मैंने कहा भाई ऐसी क्या बात है जो आप रोने लगे हो? एक्चुअली डर तो मैं भी गया था जब वो ऐसे रो रहा था। तो मैंने कहा देखो हमारे यहाँ ठीक हो ना हो, खराब नहीं होना चाहिए मरीज, क्योंकि पता नहीं कौन सा कैमरा लगा के बैठा हो और बाद में शिकायत हो जाए तो हम वाला ठीक करने के चक्कर में और जवाब देते घूमे। हमने कहा यार, फिर उससे साथ वालों से पूछा इनको और कोई समस्या है क्या? तब उन्होंने कहा कि साहब इनके गुर्दे खराब हो गए। कौन बताइए? डॉक्टर ने। तो अब जब हमने पूछी कि भाई गुर्दे की रिपोर्ट कहाँ है, बोले वो साहब हम कल ले आएंगे, आज हम तो जाई मरे आए। तो हमने कि ऐसा है, गुर्दे की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती तब तक हम एक्चुअल कॉज पे नहीं पहुंच सकते कि प्रॉब्लम क्या है आपको। सिरोधारा तो हम आपके आज करवा देंगे, जैसे सर ने बोला कि हीरामणि सर ने बोला कि सबकी सिरोधारा न करवा दो, जो कुछ शौक में आते हैं उनकी मत करवा दो। शायद मेरा भी यही मानना है, क्योंकि हम लोग एक ही गुरु के चेले हैं। मेरा भी यही मानना है कि सबकी करा दोगे और कॉज इनिशिएट नहीं हुआ, फेलियर हुआ तो आपके ऊपर लगेगा, क्योंकि 2-2.5 लीटर तेल लगता है, बहुत महंगा होता है, और वो तेल बाद में ऐसा भी नहीं है कि टमाटर आलू छौंक लो, वेस्ट होना होता है उसको। अगर 2 दिन के बाद सिरोधारा के बाद खराब हो गया तो वो फेंका जाएगा। वो ऐसा भी नहीं कि कहीं छोका छूका में लगा लो, शरीर में मालिश कर लो, कोई नहीं करेगा। बोले मेरे सर का 3-4 बार का निकला हुआ है, तेल लगा लेगा? बोले नहीं लगा हुआ। अगले दिन जब ये रिपोर्ट से आया, इसके हाथ में रिपोर्ट है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, बाद में इसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिपोर्ट कराई। ये मेरे ट्रीटमेंट के बाद है, एक्यूट रीनल फेलियर था, यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह सब बढ़ा हुआ था। इसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने कह दिया था कि गुर्दे बदलने पड़ेंगे, तुम्हारे फेल हो गए, और ये जांच करा लो वो जांच करा लो, 50-60 हज़ार रुपए का करीब इसको बिल बन गया। गांव का आदमी था ये, इसने मान लिया था कि अब गए गुर्दे बैठ गए और मैं इतने पैसे खर्च नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं मर जाऊंगा, ऐसा इसे बता दिया था। जो लोग अल्पसत्व वाले होते हैं उनको थोड़ा जल्दी ऐसा समझ में आ जाता है कुछ छोटी सीधी चीजें।
और ये वैसे ही वाला शायद होगा जो अपने मोहल्ले का डॉक्टर टाइप का होगा, क्योंकि पढ़ी लिखी बातें जैसी करता है गांव वाला। मैंने जब डिटेल हिस्ट्री दी तो ARF निकला। मैंने कहा देखो सिरोधारा तो बाद में करवाएंगे, पहले ये वाला कर लो। मैं कभी भी एलोपैथिक डॉक्टर की बुराई नहीं करता और ना उसका इलाज बंद करवाता। मैं कहता कि मेरी और इसकी दवाई में आधा घंटे का 1 घंटे का फर्क रखना, मेरी कोई खाली पेट है या नहीं है मैं बता देता हूँ कैसी है, और मेरी दवाई मैं नहीं दूंगा, मैं लिख के देता हूँ, आप मेडिकल से खरीद लाओ। कभी कभी और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेदिक वैद्य है कुछ फीस दिया होगा, मैं कभी नहीं देता। अब मैं कहता हूँ 3-4 मेडिकल स्टोर है, वहां जाके अपनी ले आओ, जाके ऑनलाइन अवेलेबल है, क्योंकि सारी केरल की कोट्टिकल आयुर्वेदशाला इनकी दवाई लिखता हूँ, उनकी दवाई होती है, आप वहां से ले आओ। क्योंकि मैं एल महादेवन सर का शिष्य भी था ऑनलाइन, मैं कभी सामने मुखातिब नहीं हुआ। ये नेफ्रोलॉजी की क्लासेस मैंने उनकी बहुत ली है, महादेवन सर की, मैं फॉलोअर हूँ, उसी लाइन पे मैंने इसे ट्रीट किया। व्हाट महादेवन सर सेज, मूत्र प्रकर्षण नहीं करना, एक्सट्रैक्शन नहीं करना, निचोड़ना नहीं है रीनल फेलियर वालों को, अवेलेबिलिटी करवाना है। वह समानवाद से लेके आना बढ़ा के, इधर से अगर कपड़े को निचोड़ेंगे तो फट जाएगा। हम लोग चंद्र परवटी गोचूर वगैरह सब दे के ऐसा कर लेते हैं, शायद उनका जैसा मानना है, मैं आई एम नॉट गोइंग डिटेल अबाउट दैट। मैंने सिरोधारा कुछ नहीं करी भैया, और ना इसे सिरोधारा की जरूरत पड़ी। ये जब 2-3 महीने में सही हुआ, मैंने कहा रिपोर्ट कहाँ कराओ, मैं रिपोर्ट नहीं करवाता, मेरी कोई लैब से कोई सेटिंग नहीं है 50% वाली, क्योंकि हम दोनों ही कमाते हैं, लड़का एक ही है, तो नहीं चाहिए वो वाले 50% वापसी वाले। क्योंकि बहुत सारी लैब्स में बेसिन टेस्ट भी होता है। बेसिन टेस्ट पता है, आपने सैंपल दिया, 2 घंटे बाद रिपोर्ट ले जाना, और उसने वो जो सैंपल है वो बेसिन फेंक दिया, रिपोर्ट बना के दे दी, पाप तो लगाएगा मेरे ऊपर। मैं हमेशा हर एक कहता हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल कराना, कम से कम भागीदार तो वो भी ना। इसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिपोर्ट कराई, बहुत प्रसन्न है, ये एज में मेरे से ज़्यादा है, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे पैर छूता आके है। जब मेरे हॉस्पिटल ये पेशेंट लेके आता है, अब ये एजेंट जैसा बन गया है, हमारे यहाँ पेशेंट लेके आएगा, हर बार आता है, मुझे ढूंढ के मेरे पैर छू के, और बड़ी मतलब इतने आदर सूचक वर्ड बोल के जाता है, मुझे भी कभी कभी प्रसन्नता होती है। सी डोंट फॉरगेट टू इनिशिएट सच सोमेटिक कंडीशन में मेंटल कंपोनेंट बहुत जरूरी है आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में ढूंढना। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइक इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। सोशल स्टिग्मा होता है, एंजाइटी, फियर होता है, डिप्रेशन होता है, ट्रॉमा होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिन मैं किसी की एटीटी बंद नहीं करता, मैंने बताया ना, मैं किसी की मॉडर्न मेडिसिन कभी बंद नहीं करता। अगर मैं मॉडर्न मेडिसिन बट एलोपैथिक डॉक्टर से वो सबसे पहले कहते हैं ये घास फूस की दवाई बंद कर, पहले मर जाएगा तू, ऐसा कहते बंद करवाने के लिए। मैं उनकी तर्ज पे नहीं हूं, मैं कहता हूं भाई साहब आप जो लाए हो, और सिद्धांत रूप से भी वो परफेक्ट है, एटीटी चल रही होती है, बंद नहीं कर सकते हैं, नहीं बंद करता। लेकिन उसके सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस ट्यूबरक्लोसिस में बहुत आते हैं, कुछ तो साइक से रिलेटेड आते हैं। वो कैसे आते हैं, क्योंकि देखो जो मरीज डॉट सेंटर पे जाता है डेफिनेटली साइकोलॉजिकली वो इल हो जाएगा। एक तो कभी डॉट में डॉक्टर नहीं था, कभी डॉट में सेकेंड हैंड मेडिसिन दे दी गई जेनरिक टाइप की जो इनसफिशिएंट थी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को मारने के लिए, तो उसे ऐसे लगता है कि सिम्टम तो रिलीव हो ही नहीं रहे। जब वो डॉक्टर को पूछता है तो डॉक्टर कहता है दवाई खाओ। जब वो उसी डॉट सेंटर के चपरासी से पूछता है तब वो कहता है कि देखो भैया तुम यहाँ ठीक नहीं हो पाओगे, तुम मर जाओगे, तुम डॉक्टर चेंज कर लो। और उसको पास डॉक्टर की दवाई के पैसे नहीं होते, तब साइकोलॉजिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है उसको, तब तो भागता है आयुर्वेदा वालों की हेल्प की तरफ है। प्लीज डोंट स्टॉप एटीटी अलॉन्ग विथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट यू डू। मैंने इनको अगस्त हरित की रसायन, चित्रक रसायन और जो खरीद सकते तो उन्हें स्वामला कंपाउंड देके लिवर के कॉम्प्लिकेशंस बचाने के लिए एमलीक्यू और डीएस एक एमएल फार्मास्यूटिकल का आता है। मैंने ज़्यादा साउथ की करता हूँ लेकिन एमएल वालों की करता हूँ यूज़, क्योंकि डीआरडीओ के सर्टिफाइड प्रोडक्ट है उनके। तो आपको लिवर प्रोटेक्शन करनी है, आपको कुछ ऐसी देने हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स ऐसे देने हैं जिससे कि थोड़ी इम्यूनिटी बूस्टर हो, और थोड़ी सी साइकोथेरेपी आप कर दो। आप उसके सामने झूठी सही कि मैंने ऐसे ठीक किया वैसे ठीक किया, मरीज को रेपुटेशन बनाने के लिए आप वो भी कर सकते हो, मैं करता हूं। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आयुर्वेदिक ओपीडी को विजिट करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेरी मंगल को शुक्र को ओपीडी होती है, ऑलमोस्ट सेंचुरी लगती है। ऐसा कभी कोई दिन नहीं आता कि जिस दिन सीबीसी ने पूरे दिन ओपीडी कर ली हो, कहीं ना कहीं से फोन आ जाता है, या तो मैं थक जाता हूँ या मरीज थक जाता है कोई।
मरीज थकने से मतलब कुछ कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कि लाइन लगी हुई है, वो कहते हैं मैं डीएम साहब के यहाँ से आया हूँ, मुझे पहले देखो। मैं वो कहता हूँ कि आप कहीं से भी आए हो, नंबर से ही देखे जाओगे, उसे नहीं देखे जाओगे। तो ऐसी कंडीशन में आयुर्वेदिक ओपीडीज को बहुत सारे गृहिणी, मैंने आईबीएस इसलिए लिख लिया कि थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए, वैसे आईबीएस गृहिणी नहीं है, वो डिस्कशन लेटर ऑन है। इस वाले कंपोनेंट में भी डायरेक्ट गट ब्रेन एक्सिस इन्वॉल्व होती है। सोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ साइक ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। जब आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करें डेफिनेटली साइक इन्वॉल्वमेंट भी रखें। मुझे, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मुझे मालूम है आपको जल्दी हो रही है। पहले स्किन डिसऑर्डर, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जैसे सुहास सर ने भी कहा कि सोरियासिस वगैरह के, क्योंकि क्या होता है ना, जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है वो पीएनआई, साइको न्यूरो इम्यूनो एक्सिस से इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका। तो उसमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका पीएनआई एक्सिस इन्वॉल्वमेंट के जरिए उनको स्किन डिसऑर्डर होती है। मैं क्या क्या करता हूँ स्किन डिसऑर्डर में। नेक्स्ट, ये पेशेंट है मंजीत सिंह, श्री चंद्रपाल सिंह। ये पेशेंट को स्काल्प सोरियासिस थी, बहुत ही डिप्रेस था। इसके मतलब वो शादी हो चुकी थी और वो फेलियर वाला चक्कर चल रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको सोरियासिस थी। पंचकर्मा ट्रीटमेंट आप करते हो, मैंने बमन कराया, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत ठीक हो जाएगा। इसको साथ साथ में पूरे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के सत्व चिकित्सा के सेशंस दिए, जितना मैं समझा सकता था, क्योंकि मेरे को एसडीएम छोड़े 15-20 साल हो गए हैं, उतनी साइकोथेरेपी अब आती नहीं है। और जब मैं था तब मुझे कन्नड़ नहीं आती थी उतनी, तो मैं साइकोथेरेपी कर नहीं पाता था। जब मैं वहाँ एसडीएम में था तो मुझे सेक्सुअल काउंसलिंग वगैरह में बैठाते थे कि वहाँ कम बात करनी पड़ती, दिखाना ज़्यादा पड़ता था। अब इतने दिन हो गए छोड़े, सत्व चिकित्सा थोड़ी हल्की पड़ गई है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ऐसे पेशेंट्स को। नेक्स्ट, ये पेशेंट प्रेम शंकर, इसको इसको भी स्किन डिसऑर्डर था। ये भी कह रहा था कि अब जीने से कुछ नहीं होगा। जैसा हमारी पिक्चर है, हम भाई ओरिजिनल है, सब वो किए हुए हैं। इसको सोमेटिक ट्रीटमेंट सारा कुछ आप पंचकर्मा दे रहे हो, बहुत टाइम लगता है इसमें। उसके साथ में आप कुछ ऐसा देते रहो थोड़ा समझाने वाला, सो कॉल्ड साइकोथेरेपी, तो पेशेंट आपसे रेपुटेड हो जाता है, आपसे बन जाता है। नेक्स्ट, इसको स्कार्फ सोरियासिस थी। नेक्स्ट, ये एक पटेल करके पेशेंट है, एक बेंगलोर का पेशेंट। नेक्स्ट करियो। नेक्स्ट, ये फेलियर था। ये पेशेंट पामर सोरियासिस की थी, ये फेल हो गई थी क्योंकि मेरे से हो नहीं पाया था। जब मैंने इसका बमन किया और मैंने इसे लाख समझाया, ये साबुन से कपड़े धुलती थी। अब मैं इसे कहता था कि भाई ये जो है, जो घड़ी साबुन हमारे यहाँ बहुत बढ़िया साबुन है, एक बार इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसा प्रचार है उसका। देखो कितना इंटेलिजेंट है वो। अगर सारे इंडियंस एक बार प्रचार इस्तेमाल कर लेंगे तो कितना बिक जाएगा। वो घड़ी साबुन यूज करती थी, मैंने उसको कहा भाई घड़ी साबुन बंद कर दो, तो वो बोली कि पैसे कौन देगा, और साबुन महंगे हैं जो हाई कॉस्ट वाले हैं। तो ये फेलियर था। मेरी साइकोफाइकोथेरेपी, रेपुटेशन फेपुटेशन कुछ काम नहीं आई, पंचकर्मा भी काम नहीं आया, मतलब पेशेंट डिसकंटिन्यू हो गया। उसे ऐसा लगा कि ये तो ऐसा ही बातें करता है, ठीक नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, ये पेशेंट आईटी प्रोफेशनल है, बेंगलोर में काम करता है, वो बनारगट्टा की तरफ कोई आईटी कंपनी है बनारगट्टा। ये बोलता है, तो मैं हमारे यहाँ से इसने 2-3 सिटिंग बमन कराया, ऑपरेशन कराया। मैं चक्रदत्त की फॉलो करता हूँ इसमें, बमन ऑपरेशन बस्ती जैसे वो मैंने करवाया। मैं केवल बमन वेरिएशन करता हूँ, बाकी चक्रदत्त का स्किन डिसऑर्डर में नहीं करता हूँ। मेरी काउंसलिंग भी बराबर इसके साथ चलती रही। पेशेंट बहुत हद तक रिकवर हुआ। ये जीएमसी बेंगलुरु में मेरा पर्चा लेके गया। मुझे इतनी शर्म लगी क्योंकि वहाँ हमारे कोई एसडीएम के थे, उन्होंने बात करी, बोले डॉक्टर साहब इसमें लिखा क्या है। देखो हमारे यहाँ जो पर्चे पे दवाई लिखी रहती है सरकारी वाली, वो लिखी रहती है जो हमारे यहाँ है, रोग वोग से कोई मतलब नहीं है। जो दवाई है वो लिखनी है आपको। बाहर वाली दवाई हम एक नीचे से पर्चा निकालते हैं अलग से। बोले ये क्यों, मैंने कहा ये बाहर वाला है। बोले साहब ये इसी पीछे लिख दो। मैंने कहा आप केस कर दोगे उस 1 रुपए के पर्चे में 2000 की दवाई। ऐसा 2-3 बार निकल चुका मेरे खिलाफ कि 1 रुपए के पर्चे में 2000 की दवाई। ठीक है, तो वो नीचे से पर्चा निकाला सादा, उस पर लिख दी दवाई को जेब में। मैंने कहा इसको बाजार से ले लेना। ये पेशेंट वहाँ पे आईटी प्रोफेशनल है, वहाँ करता था। शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि शादी के टाइम सब लोग देखते हैं, और स्किन डिसऑर्डर था। तो मुझे लग रहा अब सक्सेसफुल है इसका। ये अब बेंगलुरु से ट्रीटमेंट ले रहा, जीएमसी बेंगलुरु। नेक्स्ट, मैं ये पर्चा ही दिखा रहा हूँ आपको।
एक ये आधे डॉक्टर हैं, कासगंज के रहने वाले हैं, आधे डॉक्टर हैं, मतलब ये क्वैक टाइप के हैं, वेदाचार्य। इनका मैंने ये पंचकर्म करवाया, इनको ईचिंग स्काल्प एंड फोरहेड, ऐसी स्काल्प सोरियसिस थी, साइकोथेरेपी के साथ में पंचकर्मा करवाया, बहुत हद तक रिलीफ हुआ, डिसकंटिन्यू हो गया ट्रीटमेंट में क्योंकि ये खुद पैथोलॉजी है। नेक्स्ट, some reflection insight. I think Dr. Suhas sir and my dear Hiramani both have spoken like CBT, mindful based interventions, relaxation techniques, support, group support, psych education, and about all those things. I did not to go in detail about, और एक दिन के बोलने की बात भी नहीं है, 3 साल में हम नहीं सीख पाए तो आप 1-2 घंटे में कैसे सीख जाओगे। नेक्स्ट, सम रिफ्लेक्शंस इन इनसाइट। आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग। ओपीडी में आया, आपको एक सपोर्ट देना है उसको, पेशेंट को सपोर्ट इन द सेंस ऐसा करना है कि वो पेशेंट आपको मान ले डॉक्टर। इसमें आयुर्वेद की डॉक्टर को मानना, वो अगर आपने ओपीडी में बैठ के उसको ये मनवा लिया कि ये बहुत बड़ी बीमारी है और ये आयुर्वेद वाला सही कर सकता है, तो ये आधा ट्रीटमेंट हो गया। लोग मानते ही नहीं है कि ये ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपको वो इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग देनी है। टीचिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जितनी आपको आती है और जो वो कर सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स बहुत बड़ी बड़ी मत बता दो जो वो नहीं कर सकता है, जो वो कर सकता है उसे आप सिखवा दो, वो करता रहेगा, कंटिन्यू रहनी चाहिए। नेक्स्ट, हेल्प, पीछे करो, हेल्प एडहेरेंस टू द ट्रीटमेंट प्लान। ये सब क्यों हम करवाना चाहते हैं, उसका सोमेटिक डिसऑर्डर है, वो हमारी दवाई ऐसी तो 1-2 महीने चलने वाली नहीं है, 5-6 महीने से कम चलती ही नहीं है। जो पेशेंट आते हैं, जैसे स्किन डिसऑर्डर क्या है, रीनल फेलियर क्या है, डायबिटीज क्या है, चलती रहती है, तो वो इसलिए करवाते हैं कि वो आपके ट्रीटमेंट प्लान पे एडहेरेंट रहे, आपके पास रहे, कि बोले मान जाए कि बोले ये बढ़िया डॉक्टर है, ये लग रहा मुझे ठीक कर देगा। इंप्रूव कोपिंग स्किल एंड सेल्फ केयर, आप उसको समझा दीजिए पूरा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडफुल एंड रिलैक्सेशन, सर ने बच्चा ऐसे समझा दिया है कि डीप ब्रीदिंग, योगा, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, ये सारी टेक्निक्स आप जितना वो सीख सकता है, जितना उसमें विश्वास है। कभी कभी आप, मैंने एक पेशेंट को एच बेंसन, सर मैं 20 साल हो गया, एच बेंसन डीप मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक ना, हरबेंसन बेंसन, मैंने एक को सिखा दी हरबेंसन बेंसन टेक्निक। बोले ये क्या साहब, हम तो रोज ही ऐसा करते हैं, लड़ाई वगैरह हो जाती है तो ऐसे हाथ पे मसल्स तो खूब टाइट हो जाते हैं, इससे ये मतलब इलाज कैसे हो गया, मतलब ऐसे लोग करने लगते हैं। हो सकता है आपकी मजाक बनाए। हरबेंसन बेंसन डीप मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक क्या है, एक पार्ट को स्टिप करो, होल्ड करो, इसे स्टिप ही रहने दो, फिर चेस्ट को स्टिप करो, फिर अगले को स्टिप करो, ऐसे करके ये सब जैसे भरतनाट्यम वाले होते हैं, एक एंगल, एक आईब्रो, दूसरी अलग डायरेक्शन में, हैंड मूवमेंट अलग, वो ऑलमोस्ट हरबेंसन बेंसन टेक्निक है, ऐसे करके। तो ये सारी डीप मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक है, उसको कितनी यूजफुल है और वो कितनी कर सकता है, वो कितनी में कंफर्टेबल है, वही बताना है। बहुत बड़ी बड़ी बात बता देंगे, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट, by incorporating these insight and practice into daily life, individual with psychosomatic condition can be better managed with the symptoms, improve their overall quality of life। यही हमारा बीइंग ए आयुर्वेदिक फिजिशियन सोसाइटी में रोल भी है। हमें ये नहीं सोचना है कि केवल मैं तो मनोचिकित्सक हूँ, मैं सोमेटिक का नहीं करूँगा, या मैं केवल सोमेटिक हूँ, मनो में नहीं देखूंगा। आप दोनों देखेंगे तो आप बेटर पोजिशन में होंगे। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच, very much thankful to organizer who has given me chance to speak first time, because जब से ये कॉलेज बना है मैं शायद नींव की ईंट हूँ। अब सर बैठे हुए हैं, मैं सर के ऑफिस में आता था तो एक गेट के पास पेड़ है, उस पेड़ के पास में एक झोपड़ी थी, वो सर का ऑफिस था झोपड़ी। और चाहे इंजीनियर आए, इलेक्ट्रिशियन आए, कॉन्ट्रैक्टर आए, कितना बड़ा भी आदमी, कितनी बड़ी भी गाड़ी में आए, वो बैठता उसी झोपड़ी में था, सर का ऑफिस था। मैं वहाँ से इस कॉलेज से जुड़ा हूँ। आज मुझे ये मौका मिला कि इतने सारे बच्चों के सामने बोलने का, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू।
We are truly thankful to you, sir, for sharing your valuable time, experience, and expertise with us. Thank you very much, sir. We are honored to have our Chancellor, sir, with us for the second session. We welcome you, sir. Along with our Chancellor, sir, we have one more guest, Professor Dr. Dilip Yadav ji, who is member of Legislative Council of Firozabad, UP. He is also Chancellor of FS University, Shikuabad, Firozabad, Uttar Pradesh. I request our humble Chancellor, sir, to welcome him with token of love. Thank you so much, sir. With this, we have successfully concluded the presentation part of this second session of our seminar. Now, I would like to hand over the mic to our respected Dr. Mohit Baghel, sir. Thank you, sir. सभी को मेरा नमस्कार। और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सर यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे आदरणीय कुलाधिपति महोदय, और साथ में हमें एक अन्य विश्वविद्यालय एफएस विश्वविद्यालय के माननीय कुलापति का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है, कुलाधिपति महोदय का। तो मैं फिर से एक पुनः आप सबसे निवेदन करूँगा कि करतल ध्वनि से सब दोनों ही माननीयों का स्वागत करें। मेरे से पूर्व मंच संचालक दोनों ही डॉक्टर कुंदन सर एंड डॉक्टर रीति मैडम का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि जिस लयबद्ध तरीके से उन्होंने कार्यक्रम का संचालन किया, वह पूर्ण रूप से आभार के प्रार्थी हैं। अब मैं आगे मुझे मंत्र संचालन की दायित्व दिया गया है, तो मैं आप सभी से सहयोग की आशा करता हूं। मैं डॉक्टर मोहित कुमार बघेल, रीडर रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, आज आपके समक्ष मंच संचालन के लिए उपस्थित हूं, जिसमें मुझे पहला सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है वो वैलिडिक्टरी सेरेमनी हेतु प्राप्त हुआ है। तो जैसे कि हीरामन सर ने आज एक नया शब्द हम सबके सामने रखा, जिसे मैंने नोट भी किया था कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, कि हमें आभार दिन में स्ट्रेस जब हमें होता है और दिन के अंतिम में कोई एक ग्रेटिट्यूड प्रस्तुत करने वाला अगर हमें मिल जाए तो उससे हमारा आधा स्ट्रेस वहीं ख़त्म हो जाता है। तो आज की सेरेमनी को मैं वैलिडिटरी ना कह के एक नए शब्द से उच्चारित करना चाहूँगा, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, कि हमारे समारोह, हमारे सेमिनार को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में जिन जिन छोटे से सूक्ष्म से लेके स्थूल पहलू जितनों की भी आवश्यकता मिली पड़ी और जिन्होंने हमारा सहयोग किया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सर्वप्रथम माँ शारदा से प्रार्थना करूँगा कि हे माँ शारदा, मेरी वाणी में श्रद्धा और माधुर्य का संचार कीजिए, ताकि मैं आज की संगोष्ठी को सफल बनाने वाले सभी महानुभावों का उसी भाव से सम्मान कर सकूं, जैसे माता शबरी की भक्ति को भगवान श्री राम ने प्रेम पूर्वक स्वीकार किया था। सर्वप्रथम मैं मंच पे वैलिडिटरी फंक्शन को आरंभ करने से पूर्व मंच पे माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय उप कुलापति कुलपति महोदय, माफ कीजिएगा मुझे, कुलपति महोदय एवं डीन महोदय को आदर सहित बुलाना चाहूँगा, ताकि हम वैलिडेटरी फंक्शन को आरंभ कर सकें। सर वैलिड साथ ही मैं
हमारे विशेष अतिथि माननीय कुलाधिपति एफएस यूनिवर्सिटी सर को भी मंच पे बुलाना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं मंच में आज रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सुहास कुमार शेट्टी सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वह मंच पर उपस्थित हों ताकि हम उनका आदर सत्कार कर सकें। सर का आदर सत्कार स्वरूप हम भेंट में शॉल, सेमिनार का प्रतीक चिन्ह एवं सेमिनार का किट सर को प्रस्तुत कर रहे हैं। सर इसे सादर ग्रहण करने की कृपा करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं अन्य रिसोर्स पर्सन डॉक्टर हीरामन वारुंगा से सर का से निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आसीन होने की कृपा करें सर। सर का स्वागत हम शॉल और मोमेंटो तथा सेमिनार की किट से सर का स्वागत कर रहे हैं। सर इसे सहर्ष ग्रहण कीजिए सर। सर आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। इसके पश्चात मैं हमारे अग्रज, हमारे प्रिय और बहुत ही सरलता से अपनी बातों को रखने वाले डॉक्टर चंद्रमान सिंह सर, सीवी संघ सर को मंत्र पे आमंत्रित करना चाहूँगा। सर हमारा आदर स्वीकार करें। सर का स्वागत हम शॉल, प्रतीक चिन्ह तथा सेमिनार के किट बैग से कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रेश कुमार सिंह, प्रिंसिपल एनक्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ सर का स्वागत करना चाहूँगा। सर को आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पे। सर हमारा आदर स्वीकार करें। सर का स्वागत हम शॉल, मोमेंटो तथा सेमिनार के किट बैग से स्वागत कर रहे हैं। सर इसे स्वीकार करिए। इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर सुरमा मिश्रा मैम को, जो कि एचओडी क्रियाशारी डिपार्टमेंट है, गोप बंधु आयुर्वेद महाविद्यालय पुरी उड़ीसा में। मैम मंच पर पधार कर हमारा सम्मान स्वीकार करें। मैडम का आदर हम शॉल, मोमेंटो तथा सेमिनार किट बैग, साथ में उपस्थित हैं हमारे डॉक्टर अनुपमा मी मैडम, प्रोफेसर काय चिकित्सा डिपार्टमेंट, और डॉक्टर रीति यादव मैडम, प्रोफेसर प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग।
मैडम आपका हृदय से धन्यवाद। इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर विजय प्रकाश मिश्रा सर का, जो कि एचओडी हैं मेरे ही अपने डिपार्टमेंट में, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान विभाग, धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ उपस्थित होने के लिए। सर का स्वागत हम शॉल, मोमेंटो तथा सेमिनार की किट से कर रहे हैं। सर इसे सहर्ष स्वीकार करिए। इसके पश्चात मैं प्रोफेसर डॉक्टर बलराज सिंह सर का, जो कि एचओडी है स्वस्थ एवं योग डिपार्टमेंट, श्री सत्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद, उनका स्वागत करना चाहूँगा, सत्कार करना चाहूँगा। सर का सत्कार हम शॉल, किट बैग तथा मोमेंटो से कर रहे हैं। सर इसे शहर स्वीकार करिए। इसके पश्चात मैं हमारे सेमिनार के मीडिया पार्टनर, जो जन जन तक हमारी बातों को ले जाएंगे, आज के सेमिनार को ले जाएंगे, मिस्टर निखिल सचान सर का, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं कैरियर किक सर्विसेज कानपुर, उनका को आमंत्रित करना चाहूँगा। उनका सत्कार के लिए मैं उनका सत्कार हम शॉल तथा मोमेंटो के साथ कर रहे हैं। सर इसे सहर्ष स्वीकार करिए। इसके पश्चात मैं प्रोफेसर डॉक्टर मंजुनाथ सर का, जो कि हमारे ही जिले में एक अन्य प्रतिष्ठित कॉलेज श्री बाबू सिंह जय सिंह पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल तथा मेडिकल डायरेक्टर हैं, उनका स्वागत करना चाहूँगा। सर का हम स्वागत मोमेंटो, शॉल तथा सेमिनार की किट से कर रहे हैं। सर इसे शहर स्वीकार करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंच पे आसीन होने के लिए। अब आप अपना सर स्थान ग्रहण कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यह समय नहीं दर्पण है, अपने आलेख का प्रदर्शन है। आज जो भी हमने क्रियाकलाप किए, अब उसके पुनर्मूल्यांकन का समय है, और इस पुनर्मूल्यांकन का की जिम्मेदारी मैं उस व्यक्ति को देने जाऊंगा जो जिस इस सेमिनार का जिसको उन्हें श्रेय जाता है, हमारे महाविद्यालय के आदरणीय डीन। मैं उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। सर मंच पर आकर अपने विचार व्यक्त करें। सर ओम श्री धर्मंतरे नमः। सभा में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के चांसलर सर, एफएस यूनिवर्सिटी के माननीय चांसलर सर, हमारे वाइस चांसलर सर, एवं हमारे इस नेशनल सेमिनार में आए हुए मुख्य वक्ता, अतिथिगण
एवं हमारे मित्रगण, हमारे शिक्षक साथियों एवं छात्र छात्राओं, ये क्योंकि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर था, सभी बच्चे शांत हो जाएं। क्योंकि ये टॉपिक स्वास्थ्य सर बोल रहे थे कि फिजिकल डिजीज के ऊपर बहुत सारे सेमिनार होते हैं और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हमारे समाज में कम होती है। ये सच में सत्य बात है। जब हमने इस सेमिनार का आयोजन करने का मन बनाया तो सबसे पहले ये था कि हम सेमिनार किस विषय पर रखें, क्योंकि एक होता है कि फॉर्मेलिटी के तौर पे हम कोई भी सेमिनार कर लें और उसका यूज ना हो, तो कई दिनों तक मंथन चला। सब विभाग ने अपने अपने सुझाव भेजे, स्वाभाविक वाली बात है, हर विभाग चाहता है कि उसके विभाग से रिलेटेड कोई नेशनल सेमिनार हो। तो अंत में ये निर्णय हुआ कि हमने फिर बहुत सारे, क्योंकि क्या है कि आजकल तो QCI के रेटिंग के चक्कर में आप जानते हो सभी कॉलेज सेमिनार्स कर रहे हैं, तो हम जो भी सेमिनार का प्रपोजल आता था हमें लगता था या तो ये हो चुका है या ये घटित होने वाला है। तो ये बाद में हमें ये टॉपिक ऐसा मिला जिस पर अभी तक कोई सेमिनार नहीं हुआ था। तो जो आपने कहा तो हमें यही था कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका हमें फ़ायदा भी मिले। आज स्टेज पे आप लोगों ने इतना अच्छी चीज़ें बोली तो बच्चों को फ़ायदा हुआ। तो कोई चीज़ जो कम घटित हो रही हो और उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो ये कुछ क्या नाम रीजन था इस सेमिनार का ये टॉपिक चुनने का कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि आज भी हमारे समाज में कम चर्चा होती है। और आज जब आप लोगों को हमने सुना, स्वाभाविक वाली बात है, हम क्योंकि मैं काय चिकित्सा का आदमी हूँ तो हम ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते हैं। और आप लोगों को जब लगा कि जब आप लोग बता रहे थे डॉक्टर CVC भैया कि हम लोग अपना डिजीज देखा, सिम्टम देखा, इमीडिएट ट्रीटमेंट लिखना चालू कर दिया, तो हम लोग मानसिक स्वास्थ्य को, सच बात है, एक तो हमारे समाज में कोई अपने मानसिक बीमारी के बारे में बताता भी नहीं है। रीजन ये कि मानसिक बीमारी को आदमी ये अपने कुछ टैबू है ना कि एकदम छोड़ देते, अरे ये तो दिमागी रूप से, हाँ दिमागी रूप से गड़बड़ है, या दिमागी रूप से अस्वस्थ है, या इसका दिमाग हिल गया है। इस तरीके के सब तो जिसके पास समस्या है वो भी नहीं बताता और फैमिली के लोग तो और ज़्यादा नहीं बताते। तो ये कारण है। और इसके बारे में जब डिस्कशन करेंगे, होता क्या है, कोई चीज़ छोटी है, स्ट्रेस है, तो स्वाभाविक वाली बात है कि वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी बीमारियों में, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं आजकल, जैसे एक कहावत कही जाती है कि प्रिंसिपल पोस्ट पे 5 साल में BP और शुगर आ जाएगा। ये एक कहावत कही जाती है, क्यों? क्योंकि जॉब का स्ट्रेस है, मैनेजमेंट का ये ये कॉलेज अच्छा चलना चाहिए, टीचर का ये है कि सैलरी उनकी बढ़नी चाहिए, बच्चों का ये है कि उन्हें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और हमें सब कुछ इसके उल्टा करना होता है कि बच्चे पढ़ें, टीचर्स अच्छे से पढ़ाए, और संतुलन बनाना बड़ा कठिन काम है। संतुलन बनाना इस तरीके का ये है कि हमें एक एज पे चलना पड़ता है, तो वो स्ट्रेस का रीजन होता है। लेकिन जैसा हीरामन सर ने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कुछ उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, तो बच्चों ने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा कि इमीडिएट स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें। वो आपका जब मैं क्या नाम है, जब मैं PG करता था, तो जब मैं ECG वगैरह पढ़ता था, तो उसमें मैं देखता था कि हम योगा करते हैं तो हमारी हार्ट बीट पे क्या असर पड़ता है, तो साइनस एरिथमिया तो वही है, हम उसको प्रैक्टिस ही नहीं करते कभी, हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्वाभाविक वाली बात है, जब आप रिलेट कर रहे थे कि जब मेडिटेशन करते समय आपके दिमाग में केवल आपकी ब्रीथिंग पे ध्यान होना चाहिए। सच में बात है, आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मुझे लगता है आज ये काम करना है, इस टीचर को ये काम देना है, इसको ये करना है, वो सारा प्लानिंग मेडिटेशन के समय ही दिमाग में बनता है, या रात में जब सोते हैं तो सुबह का प्लानिंग अगले दिन का बन जाता है। तो ये जो चीज़ है, और सुहास सर ने जो बताया कि आप स्ट्रेस कम करने का दो तरीका है, या तो अपनी आप डिमांड कम कर दें या उसकी सप्लाई बढ़ा दो, स्वाभाविक वाली बात है जिस चीज़ से हो रहा है। तो स्ट्रेस का यही है कि आपके पास किसी भी चीज़ का है, आप उसको अगर नहीं करोगे तो दिन पे दिन बढ़ेगा ही।
छात्र पढ़ेंगे नहीं, स्वाभाविक वाली बात है उन्हें रिजल्ट का स्ट्रेस रहेगा ही। तो आप ये मान लीजिए 2 ही शब्दों में छात्रों के लिए कि मैं जो स्ट्रेस दे रहा हूँ, वो कैसे हैं, वो किस तरीके के स्ट्रेस माने जाएँगे? तो स्वाभाविक वाली बात है, जैसे सर ने बताया कि धारणीय और अधारणीय। तो स्वाभाविक वाली बात, आप अगर धारणीय स्ट्रेस नहीं लोगे, आज कंपटीशन का दौर है, आप अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो स्वाभाविक वाली बात है कोई दूसरा आपको राउंड के लिए आगे निकल जाए। तो ये तनाव आपके पेरेंट्स का भी आता है आपके ऊपर कि आप अच्छा करियर बनाएं, हम टीचर्स का भी आता है आपकी अटेंडेंस अच्छी रहे, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करें, और आपका अपने करियर को भी लेके रहता है। और मैं हमेशा इससे पहले मैं बच्चों को, आपने बहुत अच्छा बात बताया कि आप ज़्यादातर बच्चे जब नए आते तो वो सब साथ में बहुत दिन तक रहते कि मेरे नीट में स्कोरिंग कम रहेगी, हो सकता मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, एमबीबीएस सीट मिल जाती है, वो काफ़ी हद तक निकलती ही नहीं। अब जो हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो सच्चाई को एक्सेप्ट जिस दिन कर लेंगे उस दिन आप उस चीज़ को तत्काल उस क्षण उस आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो आप इस सच्चाई को मानिए कि आप आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं और अब इसी क्षेत्र में कुछ करना है। आप ये मान के चलिए स्वाभाविक वाली बात, कितनी विधाएं, कितने लोग अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप अगर अभी भी उस दिमाग में रहेंगे, 5 साढ़े 5 साल तक में रहेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आप जाएंगे कहाँ? तो ये, और कल तक तो हमारे टीचर ही बोल रहे थे कि सर आपने टॉपिक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का रखा, लेकिन काम इतना कराया कि सर हमको स्ट्रेस होने लगी है। ये कल तक हमारे टीचर बात कर रहे थे, हमसे कह रहे थे। और सुबह आज मैंने कुंदन को 6 बजे फ़ोन मिलाया तो एकदम एक्टिव, यस सर। मैंने कहा ये बताओ तुम रात में सोए नहीं हो या रात से जग रहे हो, या तुम बहुत रात से जग के बैठे हुए हो, इसमें फ्रेश कैसे हो? बोले सर मुझे बहुत तनाव हो रहा है कि पहला सेशन मुझे ही बोलना है, कहीं मुझसे ना हो जाए। स्वाभाविक वाली बात है। और कितना बड़ा मंच पे इतने गणमान्य व्यक्तियों के सामने बोलना स्वाभाविक वाली बात है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। आपने बहुत अच्छा किया, तो आप अगली बार और अच्छा बेटर करेंगे, ये चीज़। तो आप स्वाभाविक, आप जब किसी लक्ष्य को अचीव कर लेते हो आपका तनाव खत्म हो जाता है। तो अब इस टॉपिक पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने इस सेमिनार को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्पेशली इस सेमिनार के लिए, सेमिनार को करवाने के लिए अगर किसी व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा, एक व्यक्ति ने जो जोर दिया है वो हमारे बीसी साहब। बीसी साहब पिछले साल से पीछे पड़े थे कि आप लोग सेमिनार करिए, सेमिनार करिए, सेमिनार करिए। और मेरा थोड़ा सा ये है कि करना है तो अच्छा करना, नहीं तो नहीं करेंगे, फॉर्मेलिटी वाला नहीं करना है। क्योंकि आप ऑर्गेनाइज करिए ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे हो गया, क्योंकि आप छात्रों को नहीं पता चलेगा कि सेमिनार का स्तर क्या होता है। अब जब हम इससे कम स्तर का कोई देखेंगे या इससे अधिक स्तर का देखेंगे, तब इसका मापदंड आपको पता चलेगा, इससे पहले आपको नहीं पता चलेगा। तो मेरा ये था कि हो तो अच्छा हो, धीरे धीरे हुआ। और स्वाभाविक वाली बात है, बिना मैनेजमेंट से सहयोग के सेमिनार हो ही नहीं सकता था। तो हम सर के पास फंड के लिए गए, तो स्वाभाविक वाले कि बिना मुद्रा और बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। तो सर का पूरा सहयोग इसमें रहा, और सर ने, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने सेमिनार के लिए फंड दिया। आप लोगों से जो पैसा, बच्चों आप लोगों से जो फीस ली गई, आप ये मान के चलीजिए आप से दुगनी फीस ली जाती तो भी ये सेमिनार उस पैसे में नहीं हो सकता था। यूजुअली क्या है सेमिनार का, ये होता है कि जो फीस होती है, जो पैसा कलेक्शन हुआ उसी में ही हमें करना है, 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लगाते कहीं भी। तो आप लोगों से इसीलिए कम में लिया गया क्योंकि सर ने कहा कि जो बच्चों से लो बच्चों का रिटर्न कर दो, और आप लोगों का रिटर्न उससे भी ज़्यादा हमने करने का प्रयास किया कि आपको जो किट मिले अच्छी मिले, फूड मिले, क्योंकि फूड और किट स्वाभाविक वाली बात है ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो हमने यथासंभव प्रयास किया कि आपके साथ हम अच्छे से अच्छा जो कर सकते हैं करें, ताकि आपका इंटरेस्ट बने इस सेमिनार्स के प्रति। आगे आने वाले सीएमई में जब आप क्या नाम है, जब आपको मौका मिले आप उसमें जाएं, और जाना चाहिए। आप लोग अगर किसी नेशनल सेमिनार के लिए पार्टिसिपेट करेंगे
आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप हमें एप्लीकेशन देंगे, हम चाहेंगे कि आप जाइए उसमें। बड़े बड़े इवेंट्स होते रहते हैं। जब तक आप खूब मंडूक बने रहोगे, जब तक दुनिया में बाहर निकल के नहीं देखोगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। हम बहुत सारे सेमिनार्स के लिए आते हैं, हम लिंक भेजेंगे, जिस जिस बैच के होते हैं, टॉपिक वाइज भी होते हैं, आप लोग उसमें जाइए। जितना जाएंगे उतना सीखेंगे, उतना आपके करियर के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो एक ये चीज़। दूसरा, मेन जो इस सेमिनार की रूपरेखा बनाने वाले दो व्यक्ति, डॉक्टर मानस सर, डॉक्टर अनुपमा मैडम, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, और दूसरा मुझसे भी बहुत मेहनत कराई। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आके मुझे स्ट्रेस देते रहे। सर, रोज़ सुबह मैं जब आता था तो मेरे सामने लिस्ट दे देते थे, सर आज ये काम होने हैं, सर ये काम मुझे करा के दीजिए। तो अच्छा तो लगता ही था, क्योंकि स्वाभाविक वाली बात है कि काम हमें पता होता है, और फिर मैं पूरे दिन उन चीज़ों को अरेंज करना, साफ कराना, तो ये चीज़ है, इन लोगों ने बहुत मेहनत की। इसके अलावा बहुत सारी कमेटियों ने बहुत मेहनत की। स्वाभाविक वाली बात है, स्टेज डेकोरेशन कमेटी, बच्चों ने बहुत मेहनत की। स्वाभाविक वाली बात है, बच्चों की कई कमेटियाँ थी, फूड कमेटी हो या डिसिप्लिन कमेटी हो, और स्पेशली जो बच्चे हमारे कमेटियों में थे, इससे पहले बच्चों ने अपनी फ्रेशर पार्टी दी थी, तो मुझे 24 बैच के बच्चों ने जो डेकोरेशन और फूड का इंतजाम किया था, हॉस्पिटलिटी का, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैंने उनको जिम्मेदारी दी थी कि इस कॉलेज की ये तैयारी तुम लोगों को करनी है, तो आप जो भी अरेंजमेंट ये सब देख रहे हो, ये सब टीचरों की मदद से बच्चों ने ही किया है। तो इस सफल आयोजन बनाने के लिए, और इसमें बहुत अच्छे वक्ता हो के आपने सुनने के लिए, क्योंकि स्वाभाविक वाली बात है, आप कहीं पे भी जाए, कोई मंच पे बोल रहा है और पीछे अगर अच्छे से कोई सुनने वाला नहीं, भले आपने वो डर से सुना मेरे, या आप अच्छे वक्त बन के सुने, लेकिन आपने काम अच्छा किया। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि इस कॉलेज में एक गवर्नमेंट फंडेड एक सीएमई लेके आए। ये हमारा संकल्प है। और अब अगला स्टेप क्या, तो मैं चाहता हूँ कि चांसलर सर के आशीर्वाद से नेक्स्ट टाइम हम कोई बड़ा इवेंट्स करें। अभी हमने एक दिन का नेशनल सेमिनार करने का प्रयास किया, हम चाहेंगे कि हम इंटरनेशनल सेमिनार करें और कम से कम 2 दिन का करें। हाँ, इसी इसी के साथ ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस काम से आए हैं, आपने सेमिनार की का आनंद उठाया, सब चीज़ें हैं। बैक टू पवेलियन, कल से रेगुलर जैसे आपकी एक्टिविटीज़ चल रही है, आप वैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए, पढ़िए। अटेंडेंस, स्वाभाविक वाली बात है, वो अटेंडेंस आपके लिए स्ट्रेस रहती है, लेकिन वो कौन सी स्ट्रेस है, सर ने अभी क्या बताया था कि ये मेरा ये मेरा मूल्यांकन है कि जो बच्चे क्लास में कम आते हैं, वो परीक्षा में तो सफल कम होते ही होते हैं, जीवन में भी सफल कम होते हैं। इसका एहसास आपको अब नहीं होगा, इसका एहसास आपको कई सालों के बाद होगा। आज सौभाग्य से इस सेमिनार में एक, जब सुहास शेट्टी सर आए, तो उन्होंने कहा कि ये लगता है मिनी एसडीएम एलुमिनाई मीट हो रही है, क्योंकि सुहास शेट्टी सर ये एसडीएम में हमारे सुपर सीनियर थे। डॉक्टर सीवी सिंह भैया ये उनके जूनियर थे। डॉक्टर हीरामन सर और डॉक्टर मंजुनाथ सर पीजी में वहाँ पे थे, ये भी हमारे सीनियर थे। और डॉक्टर विजय प्रकाश मिश्रा और डॉक्टर बलराज सिंह, ये मेरे क्लासमेट थे। और हमें एहसास नहीं हुआ उस समय एसडीएम में, जिस तरीके से मैं आपके साथ सख्ती करता हूँ, हमें भी खराब लगता था। अरे यार, ऐसा लगता है जैसे स्कूल से निकल के दोबारा से गुरुकुल में आ गए। ये चीज़, लेकिन एक जब एक मिनट सर, लेकिन जब मैं एसडीएम से बाहर निकला, एसडीएम से बाहर निकला, मार्केट में जब आया, और जब मैंने अन्य कॉलेजों के प्रोडक्ट देखे, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इंटायरली अलग हूँ।
हाँ, और सच में जो मैं मैं पीएन राव सर को जब तक वहाँ रहा मुझे लगता था अरे यार उनको देख के तब मतलब डरते ही रहते थे पूरी जिंदगी वहाँ पे स्ट्रेस नहीं हुई। इसलिए जब मैं वहाँ से आया मैं आज उस महान सत्य का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अगर मैं एसडीएम में नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ पे भी नहीं होता। और मैं चाहता हूँ कि मेरे विद्यार्थी जो मैं आज 30 साल बाद बोल रहा हूँ कि आप लोग बोलो इस संस्था के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं, क्योंकि आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं पुनः माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित माननीय कुलाधिपति महोदय एफएस यूनिवर्सिटी सर का आदर सत्कार करने हेतु प्रतीक चिन्ह, शॉल और सेमिनार किट उन्हें भेंट करने की कृपा करें सर, ताकि हमारे सेमिनार में में चहुमुखी धनोधान्य या यशों की प्राप्ति हो, यश कीर्ति हमारी आकाश तक पहुंचे सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में उपस्थित होकर अपने समय में से कुछ पल हमारे लिए निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये हमारा सौभाग्य है कि सर अपने आशीर्वचन हमें देना चाहते हैं। धन्यवाद। आज के इस राष्ट्रीय सेमिनार में हमारे बीच उपस्थित मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब, इस यूनिवर्सिटी के कुलपति जी, डीन साहब, हमारे सामने बैठे डॉक्टर सीवी सिंह साहब, जितने गेस्ट आए हैं, आगंतुक आए, उनमें से सीवी सिंह साहब को मैं पहचान रहा हूँ, और जितने भी महान विद्वान अपने इस क्षेत्र के आए, उनका तहे दिल से धन्यवाद। सूचना मिली, हम लोग आए, स्वागत सम्मान किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा, मुझे लगता है आगे और ऊंचाइयां छुएगी। शिक्षा ही एक वो क्षेत्र है जिससे हम लोग अपने आप को एक किसी सीमा तक ले जाने का काम कर सकते हैं। उसका जो आज टॉपिक है सेमिनार का, स्ट्रेस, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत जरूरत वाला टॉपिक है। इस पर महान विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे होंगे, हालांकि हम नहीं सुन पाए, लेट आए, लेकिन आज के समय में इसकी बहुत जरूरत है। इस पर अच्छे अच्छे विद्वानों के विचारों को सुनने का और सुनने के बाद अपने जीवन में ढालने का। आपका जो बीएमएस कोर्स चल रहा है, आयुर्वेद की पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे, उसके बाद यूजी करके पीजी भी करेंगे, और मुझे लगता है आयुर्वेद से ही सारी मेडिकल का क्षेत्र, एलोपैथ भी इसी से शुरू हुआ है, और आयुर्वेद जड़ है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र को आगे पूरी तरह से हमें बहुत अच्छा रखने का काम करता है। आयुर्वेद में कहीं कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं है। आज के समय सरकार भी काफी इसको प्रमोट कर रही है। तो मैं कहना चाहूंगा, जितने भी छात्र बैठे हैं, जितने भी विद्वान लोग बैठे हैं, सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य सर्वोपर है। यह स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं होगा तो किसी काम में मन नहीं लगेगा और कहीं भी आप रास्ते में भटक जाएंगे। एक विद्वान का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा हम लोग पढ़ाते हैं, शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, छात्र पढ़ते हैं, कभी किसी बच्चे को क्लास में नींद आ जाती है। उन्होंने कहा उस बच्चे से बेटे जाके सो लो, यदि मैं जबरदस्ती पढ़ाऊंगा, आप भी जबरदस्ती पढ़ोगे तो आपका दिमाग सोया रहेगा। तो लिहाजा पूरे मन योग से जब तक हम नहीं पढ़ेंगे और पूरे अच्छे विचारों से नहीं पढ़ेंगे तो आप जो क्वालिटी की एजुकेशन, गुणवत्ता की शिक्षा नहीं ले सकते। ये जरूरी है स्वास्थ्य के प्रति हम लोग सजग रहें। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा, हरियाणा में एक आईपीएस ने आत्महत्या की। उनकी पत्नी आईएएस थी, उस पर उन पर तो कोई कमी नहीं, शोहरत की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, सम्मान की कमी नहीं, हर तरह से संपन्न। ये लोग क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? एक बरेली में
डॉक्टर साहब बैठे हैं, अपर जिला जज थी एक महिला, उसने अपने कमरे में अंदर फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस हमको रास्ते भटकाने का काम करता है। तो मैं कहना चाहूंगा, पढ़ाई के साथ साथ 60% हमें विद्यालय से, यूनिवर्सिटी से ज्ञान मिलता है, 40% हमें समाज से ज्ञान मिलता है, बड़े कल्चरल प्रोग्राम से ज्ञान मिलता है, इस तरह नेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार से ज्ञान मिलता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से ज्ञान मिलता है। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ इन सब एक्टिविटीज में आप लोगों से निवेदन है, बहुत अच्छी तरह से भाग ले और वर्तमान पे जिए। भविष्य के लिए बहुत चिंता न करके जब वर्तमान को हम सुधार लेंगे तो भविष्य तो आपका आपके अपने हाथ में पूरी तरह से आ ही जाएगा, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इसीलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको कहना चाहता हूं, स्वस्थ रहिए, बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और जो काम दिया है, जो काम गुरुजी ने दिया है, सर ने दिया है, डीन साहब ने दिया है, बहुत मन लगा के करिए और वर्तमान में आप मेहनत करेंगे तो भविष्य पूरी तरह से आपका बनेगा। ईश्वर, प्रकृति, नेचर हमेशा आपके साथ है। एक माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, और सबकॉन्शियस माइंड में जो आप डाल देंगे, मुझे लगता है प्रकृति और दुनिया की कायनात शक्तियां पूरी तरह से आपका साथ देती हैं, बशर्ते किसी क्षेत्र में आप प्रतिज्ञा कर लें, पढ़ कर लें, मुझे ये काम करना है। हम लोग वृंदावन जाते हैं कभी कभी, एक राधे कुंज है, राधे कुंज में कम से कम अंग्रेज 100, 150, 200 रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण सब कुछ है, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। तो उनकी एक वाक्य मैं बताना चाहता हूँ, वहां अच्छे अच्छे पैसे वाले विदेश के लोग उस अपने ट्रस्ट में, उस जगह मंदिर में पूरी सेवा करते हैं। किसी को किचन का काम दिया जाता है, किसी को झाड़ू लगाने का दिया, किसी को सफाई का दिया जाता है। जो जितना काम जिसको दिया जाता है, वो सब करोड़पति अरबपति लोग हैं, लेकिन अपने काम को बखूबी जिम्मेदारी से निभाते हैं और कहीं कोई किसी की शिकवा शिकायत नहीं। और जब उनसे कोई मिलने जाता है, ऊपर भी नहीं देखते, अपने काम में लगे रहते। इसीलिए हमारा कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारी, जो हमारा कर्तव्य है हमें करना है, उसको पूरे मनयोग से करिए। मुझे लगता है दुनिया की, प्रकृति की सारी कायनात पूरी तरह से आपका साथ देगी, आपका जीवन सफल होगा। ईश्वर से दुआएं करेंगे, मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ते हैं वो तरक्की करें और अपने माँ बाप के सपने पूरे करके अपने गांव का, शहर का, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। माननीय कुलाधिपति महोदय सभागार से प्रस्थान कर रहे हैं। सब करतल ध्वनि से सर का आदर सत्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम को आगे प्रस्थान ले करते हुए मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगा, कृपया सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें, शांति बनाए रखें। हम कार्यक्रम की अंतिम बेला की तरफ बढ़ रहे हैं, सबका सहयोग चाहूँगा। अंत में एक बहुत ही, जैसे एक उदाहरण स्वरूप कहा जाता है कि बहुत ही एक सुंदर घड़ा है, उस घड़े का निर्माण किया गया, और उस घड़े के निर्माण में जैसे कुम्हार ने अपना कार्य किया होगा, कुम्हार के पहिए ने अपना कार्य किया होगा, कुम्हार ने जिस मिट्टी का उपयोग किया होगा उस मिट्टी का भी वर्णन या कुछ महत्व रहा होगा, उस देश काल का भी महत्व रहा होगा। उसी प्रकार एक बड़ी संरचना के बीच में जिन जिन लोगों का सहयोग लगा, जिन जिन लोगों ने मेहनत पूर्वक कार्य किया, उनको धन्यवाद ज्ञापन हेतु, वो वोट ऑफ थैंक्स हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर मानस रंजन देवता सर से कि वो मंच पर आकर वोट ऑफ थैंक्स दें।
honorable dignitaries, honorable guests, respected resource persons, dear colleagues, and my dear students. At the end of this meaningful and successful national seminar, it's my honor to propose the vote of thanks on the behalf of the organizing committee and on behalf of the institution. First of all, I express my sincere gratitude to our Honorable Chancellor, sir. His guidance, encouragement, support have always inspired us to conduct academic programs with purpose and quality. I respectfully thank our chairperson, madam, for her constant motivation, keen interest, valuable guidance, which greatly helped in the smooth conduct of this seminar. I extend my heartfelt thanks to our esteemed Pro-Chancellor, sir, for his support, direction at every stage, which helped us to plan and organize this program in an orderly manner. I extend my heartfelt thanks to all our respected resource persons for sharing their knowledge and experience. Their scholarly inputs greatly enrich the academic value of this seminar. My sincere thanks to our respected Vice Chancellor, sir, for his academic guidance and encouragement. His leadership has always motivated us to pursue academic excellence. I am grateful to our Registrar, sir, for his timely administrative support and cooperation, which ensured smooth handling of all official and organizational matters. I express my deep gratitude to our respected Dean, Professor Dr. A.K. Batham, sir, whose leadership, guidance, and constant support played a key role in planning and successfully conducting this seminar. I sincerely thank our beloved Vice Principal, Dr. Vinayak, sir, for his guidance and encouragement and administrative support throughout this program. I would like to record my special thanks to our co-organizing secretary, Professor Dr. Anupama Madam. Her quiet dedication, careful planning, and continuous efforts were crucial to the smooth execution of this seminar. I sincerely appreciate the efforts of all committee members of Advisory Committee, Financial Committee, Registration Committee, Hospitality and Reception Committee, Stage Venue Management and Discipline Committee, Documentation and Certificate Committee, Media and Publicity Committee, Cultural and Anchoring Committee, and Food and Refreshment Committees. Their teamwork and commitment from the beginning to the end made this program a great success. I sincerely thank our anchors, Dr. Kundan Kumar Mishra, Professor Dr. Riti Yadav, and Dr. Mohit Baghel for conducting this session smoothly and confidently. Their clear communication and coordination kept the program disciplined and engaging. Many contributions remain behind the scenes. I would like to specially acknowledge the sincere effort of Dr. Arjendra Singh and Dr. Jojan J. Jeron. Please clap for them, whose support and hard work were invaluable. I would like to mention the logo of our national seminar, Mano Ayatana, was designed by Dr. Jojan J. Jeron. The flex, the flex that you are seeing all over the campus, these were created, and the printing work was successfully completed by Dr. Arjendra Singh. I also thank all our distinguished guests whose presence added dignity and importance to the program. My sincere thanks to non-teaching staff and student volunteers who worked with dedication and responsibility. I appreciate our dear students for their active participation, discipline, enthusiasm, which made this seminar lively and meaningful. I sincerely thank the college media team, Dr. Sorry, of Mr. Brijesh Dixit and Mr. Ayush for their dedicated coverage and proper documentation of the event. I thank Aligarh Mishtan Bhandar caterers, Fatehgarh Farukhabad, for providing hygienic and timely food service, ensuring comfort of all delegates and guests. I also extend my sincere thanks to Sri Guru event team for their neat, thoughtful arrangement which enhanced the ambience of the venue.
We also thank Nandan Bookstore and Katiyar Printing Press for their timely and professional support. I thank media partner Carrier Kick Services for their professional support and valuable cooperation. My sincere thanks to our media persons for their effective coverage and cooperation. I greatly acknowledge Vaidyaratnam Aushadhalaya and SNA Aushadhalaya Kerala for setting up informative stalls and for valuable cooperation. Finally, I thank everyone who contributed directly or indirectly to the success of this seminar. With these words, I conclude. Thank you very much. मैं कार्यक्रम में सहयोग के लिए, जो कि मेरी त्रुटि रही, मेरे दिमाग से निकल गया, मैं उसके लिए पुनः माफ़ी मांगता हूं कि हमारे सेमिनार के फार्मास्यूटिकल सपोर्ट रहे, हमारे साथ में सहयोग जिनका रहा मिस्टर राजीव RSM वैद्य रत्नम औषधालय तथा मिस्टर अजय ASM SNA औषधालय, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो हमारे साथ सेमिनार में जुड़े। उनका पुनः पुनः हृदय से धन्यवाद। आज के सेमिनार के साइंटिफिक सेशन को अंतिम बेला पे ले जाते हुए मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि ये समय है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत हुआ, आंखों में थकान आ गई है। एक हाई टी की व्यवस्था है आप लोगों के लिए, जिसके लिए आप सभी लोग फूड जोन में आमंत्रित हैं। उसके पश्चात और स्ट्रेस को थोड़ा कम करने के लिए कल्चरल प्रोग्राम रखे गए हैं, उनका निष्पादन करवाया जाएगा। उससे पूर्व मैं सभी आज के माननीय अतिथि, जिसमें दो रिसोर्स पर्सन और हमारे अन्य अतिथियों को मंच पे बुलाना चाहूँगा एक फोटो शॉट के लिए। साथ ही डीन सर और वाइस प्रिंसिपल सर को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा कि एक फोटो शॉट के लिए मंच पे आने की कृपा करें। आपको एक और सूचना देनी है, जो डेलीगेट्स बाहर से आए हैं, आईटी के पश्चात वो अपने सर्टिफिकेट नीचे रजिस्ट्रेशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं, तो कृपया आईटी ग्रहण करने के बाद वो अपने रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लें। धन्यवाद। सभी लोग बारी बारी से जाइए, जैसे आपको गाइड किया गया है आपके शिक्षकों और सीनियरों द्वारा, बिना शोर शराबे के। और हाई टी के बाद आपको वापसी भी करनी है कल्चरल इवेंट्स के लिए, ठीक है? तो उसी तैयारी के साथ जाइएगा। साथ ही मैं सभी फैकल्टी मेंबर से भी अनुरोध करता हूं, वो भी फोटो शॉट के लिए मंच पे आ जाएं। सभी फैकल्टी मेंबर, सारे आदरणीय फैकल्टी मेंबर, प्रोफेसर्स, रीडर्स एंड लेक्चरर, सभी विभागों के मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हाँ, मंच पे आए, एक फोटो शॉट हो जाएगा हमारा, हमारी मेमोरीज क्रिएट हो जाएंगी एक सुंदर। सभी फैकल्टी मेंबर्स कृपया मंच पे आने की कृपा करें।
हाँ। कृपया सभी फैकल्टी मेंबर स्टेज पर आने का कष्ट करें। Thank you. Thank you, one and all.
गंगा जली है जल नहीं गंगा के पास है, बांधे बांधों के जाल में कहीं नहरों के जाल में, बांधों के जाल में कहीं नहरों के जाल में, सिर पीट पीट रो रही शहरों के जाल में, नाले